G84 इस्लामाबाद, यही है जी, हेड ऑफिस जो है मतलब, ठीक। अच्छा, तो ये जरा बताएं कि प्रोसीजर क्या होता है इलेक्शन का। वो तो आपने बता दिया था कि वो इलेक्शन कौन कंडक्ट करेगा, मगर कैसे कौन, अगर कोई शख्स लड़ना चाहे, मेंबर, सिर्फ मेंबर लड़ सकते हैं इलेक्शन या कोई भी लड़ सकता है? मेंबर्स पीटीआई के अपने? Yes sir. If your lordship takes a look at page 140, paragraph 5, internal party elections. जी हाँ, ये बताइए। Party elections shall be held in... ये तो वो तरीकेकार आपने बताया था। जी सर, इलेक्शंस चेयरमैन का किस तरह होगा ये सारा मेंशन है, एंड देन द इलेक्शंस ऑफ अदर ऑफिस। अगर आपने कहा 5 साल, इधर तो उन्होंने लिखा है कि चेयरमैन के इलेक्शन हर 2 साल में होंगे, शिक नंबर 5(1)(3) और शिक नंबर 5(2)(1) कहती है कि बाकी ओहदेदार हर 3 साल में होंगे इलेक्शन। आप क्यों कह रहे थे कि हर 5 साल में होना चाहिए? अंडर सेक्शन 208 ऑफ द इलेक्शन एक्ट, द प्रोवाइजो 208 सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 208। एक सेकंड माय लॉर्ड, पढ़ी, कैन यू रीड इट? यस माय लॉर्ड। Subsection 1, then your lordship will see the proviso, provided that a period not exceeding 5 years shall intervene between any two elections. ये तो आउटर लिमिट, ये आउटर लिमिट है। आउटर इनर लिमिट तो इन्होंने खुद तय की हुई है कि 2 साल के चेयरमैन के होंगे, 3 साल के होंगे, बाकी ओहदों। जी सर, यही पोजीशन है। बिल्कुल बिल्कुल यही है जी। If your lordship will see page 141, जी 5.1.3, election of the chairman shall be held 2 years before each scheduled general election in the country. 5.1.4, in case the chairman position falling vacant due to any reason, the SG, which is the Secretary General, shall take additional charge of the office in the interim, and election for the chairman's office shall be held within 30 days of the position falling vacant. SG क्या है? Secretary General. वो कौन है? Secretary General, my lord, नहीं, इनके कौन कोई हैं मुंतखब? इस वक्त that's a grey area, but they claim it is Mr. Umar Ayyub. The election commission maintains that the previous Secretary General, as per their record, Mr. Asad Umar, continues to be the Secretary General on their record. अच्छा, असद उमर साहब ने इनकी पार्टी छोड़ दी है? There's nothing on record. प्रेस में उनके स्टेटमेंट जरूर हैं. How did Mr. Umar Ayyub was appointed? If your lordship may see page 464. पेपर बुक्स आपके पास है. Page 464. Volume 2, my lord. Page 464. This is not Umar Ayyub, this is the Chief Election Commissioner. यार क्या करते हैं? So 460. जी 464 पार्ट 2 है। Part 2. This is how the Federal Election Commission was appointed. ये तो एक नोटिफिकेशन है 28 नवंबर का। जी सर, उमर अयूब खान साहब का नोटिफिकेशन है। पढ़िए। Following the resignation of Barrister Gohar Khan on November 27, 2023, it is notified that Mr. Niazullah Khan Niazi is hereby appointed as CEC Pakistan Tehreek-e-Insaf with immediate effect. ये तो उमर अयूब खान इशू कर रहे हैं। उमर अयूब खान कर, उमर अयूब खान साहब किस तरह अपॉइंट हुए? There is nothing on the record of the Election Commission of Pakistan. नहीं, तो ये गौहर खान साहब किस ओहदे से मुस्तफी हो रहे हैं? Sir, from the post of the Chief Election Commissioner. अच्छा, okay. But again, there's nothing on the record of the Election Commission communicating that, because in law, if your lordship will see, इनका कोई इस्तीफा है या इनको निकाला गया है असद उमर साहब को? not on the record of the Election Commission. अच्छा, आप बता रहे थे तरीकेकार। जी सर, if your lordship will see page 5.1.3, which talks about the Election Commission, the election of the chairman. हो गया, तरीकेकार बताइए। जी सर. Then election of other office bearers. The elections for following offices shall be held every 3 years. देख लिया, तरीकेकार बताइए। Sir, 5.2.2, elections shall be held by direct secret ballot of the eligible party members cast to the panel of candidates as specified for each organization, including wings as given in the relevant clauses. ये बताइए ना relevant clauses.
any losing panel shall get 2 seats. Any in the relevant executive committee, provided it had secured more than 35% of the total poll votes. Any losing panel shall get 1 seat in the relevant executive committee, provided it had secured more than 20% of the total poll votes. The method of removal from the office is only through the SCAD as provided for in the relevant section. There is no provision for a vote of no confidence at any level. Any seats falling vacant in any of the executive committees shall be nominated by the relevant panel. तो ये पैनल का क्या मतलब है? Sir, when elections are announced, various people come up and panels are announced that these following persons are on one panel, other persons are on another panel, and elections are held on that basis. So you belong to various, so within intra-party there are, let's say, groups, and you belong to various जब groups. ये इलेक्शंस हुए तो कितने मेंबरान मौजूद थे? Sir, the elections, so far as the elections were concerned, they were all elected as we showed to your lordship. नहीं, वो तो उन्होंने लिखा ये मुंतखब हो गए, Unopposed. मगर अनअपोज हो गए, मुंतखब हो गए जी। मगर उस मीटिंग में ये वो जो आप उसको कहना पसंद फरमाएं, इलेक्शन में 500 लोग थे, 1000 लोग थे, 10,000 लोग थे, मतलब कितने लोग थे? My lord, we don't know because once the venue was... नहीं, इन्होंने बताया कुछ या नहीं बताया? नहीं. When the venue was announced that the elections are going to take place टोटल मेंबरशिप आपको पता है कितनी है? in KPK, इधर वो इलेक्शन कहाँ हुए एक्चुअली? in KPK, नहीं, किस जगह, कौन से, किस but sir, होटल में, the दफ्तर में? election commission wrote a letter to them. नहीं नहीं, Yes. एक्चुअली हुए किधर? Venue Sir, of the election. reason why we are unable to tell your lordship the venue is that we wrote a letter to them that in order to make arrangements and in order to provide security, please communicate to us where these elections are आपको taking नहीं place. पता है? They didn't communicate to us where the elections were आपको taking नहीं place. पता है? No, sir. हम इनसे पूछ लें खान साहब से। जी, बिल्कुल। खान साहब, इलेक्शन कहाँ हुए, कौन सा वेन्यू, कौन सा था? नहीं नहीं, वेन्यू कोई होटल में हुए, कोई दफ्तर में हुए, किसके दफ्तर? हाँ, कौन सी जगह ओपन? वो एक छोटा सा गांव है। हाँ, क्रिकेट ग्राउंड है। It's a small village. अब आपसे सिर्फ एक सवाल पूछे ना छोटा सा, किस जगह हुए? तो आपने कहा क्रिकेट ग्राउंड में हुए। चिमकनी में कोई जगह है? छोटा सा गांव है। क्या नाम है? रानो गढ़ी। ये किधर है ये? ये कोई आपका नोटिफिकेशन था कि हम इलेक्शन फलां तारीख को करने जा रहे हैं चमकनी रानो गढ़ी में, कि जो मेंबरान आना चाहें उधर वोट डालने के लिए? वो किस सफ़े पे है? ये रानो घड़ी का इंतखाब क्यों खास तौर पे हुआ है? तो एक छोटी सी जगह गांव है, अननोन प्लेस है। नहीं, ये जरा बताएं, कोई नोटिफिकेशन है ऐसा रिकॉर्ड पे? No, sir. आप बताएं। What we नियाजुल्लाह साहब, कोई ऐसा नोटिफिकेशन है कि कहीं ये जगह हो रही है इलेक्शन, तो मेंबरान को पता तो चले ना वोट डालने कहाँ आएंगे वो? हमको देखते एक My lord, at page 93 in volume 1 is the letter which we received from the Pakistan Tehreek-e-Insaf. This was 90 page 93. 93। Yes, my lord. ये लेटर है जो प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी के लिए उन्होंने लिखा चीफ इलेक्शन That in compliance of the order dated 23rd November, 93 पेज नहीं पार्ट 3 PTI has announced to hold the intra-party election on 2nd December 2023. According to the Constitution, PTI, the Federal Election Commission of PTI, has announced a schedule with polling day as December 2, 2023. The venue would be Peshawar KPK. You are kindly requested to issue necessary direction to the Chief Secretary KPK and IGP KPK or any other officer as you may deem necessary to provide us appropriate permissions and security so that order of this Honorable Commission could be complied with. Sir, if you नियाजुल्लाह साहब, इसमें आपने तो चमकनी का जिक्र नहीं किया है, तो आपने कहा पेशावर में हो रहे हैं इलेक्शन। पेशावर केपी नहीं तो पेशावर तो एक बहुत बड़ा शहर है, तो कहाँ आपको सिक्योरिटी दी जाए? नहीं, कहाँ लिखा है ये?
आप वो तहरीरी बताइए ना, जवाब वो किधर बताया आपने? सिर्फ जगह बता दें, वेन्यू। कोई है कोई कागज रिकॉर्ड पे हमारे? नहीं तो अच्छा, ये सवाल उठेगा कि आपके मेंबरान को पता कैसे चलेगा कि हम कहाँ जाके वोट डालें? भाई इलेक्शन कमीशन तो आपके मेंबरान नहीं है ना, ये तो एक रेगुलेटरी बॉडी है। मगर आप अब जरा सुन लीजिए ना, आपके अपने मेंबरान जो हैं उनको कैसे पता चलेगा मैं कहाँ जाऊं वोट देने अपना? आप जवाब नहीं दे रहे हैं सवाल का। चलिए खैर आगे बढ़ें। My lord, if your lordship may graciously turn the page, I am directed to refer to Election Commission of Pakistan. This is the letter from Commissioner Peshawar Division. 94 के ऊपर Page 94. Commissioner Peshawar Division writes to them, I am directed to refer to ECP dated 30th November 2023 regarding above noted subject and to state that immediately on receiving the directions you were contacted on telephone number such and such as well as through letter dated 30th November on same day copy enclosed to provide the necessary information so that foolproof security could be provided as directed by the Honorable Election Commission of Pakistan. I am further directed to state that not only are these instructions of the ECP but prudently this is required in the present security environment where the province of Khyber Pakhtunkhwa is facing peculiar security environment every day and where the law enforcing agencies are very particular about security plans, especially regarding public gatherings in Peshawar which have faced attacks on LEAs and others leading to significant loss of property. It is however noticed that no response has still been received and therefore not even the initial work for a security plan has been started. My lord, we therefore write to them, next page, that they should on immediate basis provide us, and then if your lordship may see the next letter, it goes from the Election Commission of Pakistan on 30th November, page 96 and 97, I'll read two letters. 97, if your lordship may proceed to immediately. I am directed to refer to the Honorable Election Commission of Pakistan dated 30th November 2023 on the above referred subject and to state that in order to comply with the directions of the Election Commission of Pakistan, the following information may please be provided to make necessary arrangements for peaceful conduct of said election. 1. Venue. 2. Expected start and conclusion time. 3. List of polling staff. 4. List of participants. वो वेन्यू की बात है। जी सर, venue right at the top. Number 1 we say tell us where the venue is. जवाब मिला आपको इसका? No sir, we got no reply to this letter. तो देखिए एक तो बात है ना, सरकार चले वो कहेंगे जी सरकार तो छोड़ो, हमें आपकी सिक्योरिटी की कोई जरूरत नहीं है, मगर मेंबरान को तो पता होना चाहिए ना कि मैं जाके कहाँ वोट डालूं अपना, उनको तो पता हो। आप अपने वक्त पे जवाब दीजिए ना, हम सवाल आपसे पूछ चुके हैं मगर आप जवाब नहीं दे रहे ना, बहस ना कीजिए। हमने सिर्फ एक मामूली सा सवाल पूछा है, कोई कागज है रिकॉर्ड पे जिसे आपके मेंबरान को आपने बताया कि इस जगह इलेक्शन होंगे, ये तीसरी बात है बस। अब आपकी आवाज माइक पे आ जाइए ना। कोर्ट ही कंसर्न थे कि आपको तो अपने मेंबर्स को कि हमें पता था कि भाई अगर आपका मिसाल के तौर पे मेंबर ये बैठा हुआ है वोट डालने जाना चाहे तो उसको पता तो होना चाहिए मैं कहाँ जाऊँ वोट डालने। तो हमने व्हाट्सएप के जरिए बता दिया था कंसर्न जो ड्यूटी लगाई गई थी असिस्टेंट कमिश्नर, ये आप किधर बात कर रहे हैं कि हमारा और वहाँ लोग पहुंचे। नहीं, आपके हर सूबे में आपके मेंबर्स हैं ना न्याजी साहब, आपके हर सूबे में मेंबर्स हैं ना जी। आपका जो इलेक्शन का तरीक़ेकार है वो तो हर जगह से सूबे से भी लोग आने थे ना जी। तो अगर आप पेशावर में एक अननोन प्लेस पे कोई इलेक्शन कर रहे हैं तो उसमें सिंध के लोगों को भी आना है वोट डालने, पंजाब के भी आना है और बलूचिस्तान से भी आना है। अगर आप चलाएंगे वीडियो मैसेज नहीं मैं वीडियो से नहीं, आप वीडियो की बात नहीं ना, आप ये वीडियो की बातें छोड़ दें, तरीक़ेकार से हम जानना वीडियो पे चाहते हैं। केसेस नहीं चलाते हैं, हम केसेस जो हमारे सामने चीजें होती है उस पे चलाते हैं। ये आप लोग वीडियोस बाहर जाके जितने मर्जी चला लें। उस दिन अगले दिन भी हमने यही बात की थी किसी केस में कि भाई ये हम आईनी अदालत है,
कोई एक सिंपल सा सवाल पूछ रहे हैं कि कोई इतला आपके तहरीरी तौर पे है या नहीं है, बस खत्म। इलेक्शन कमीशन से भी जो आपकी कॉरेस्पॉन्डेंस है ना, उसमें वो आपसे पूछ भी रहे हैं और आप लिख नहीं रहे। वेन्यू तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना इलेक्शन के लिए, कि आप उनको इंटीमेट करें पूरे पेशावर में वो सिक्योरिटी आपको देंगे या सिर्फ एक जगह पे देंगे, क्योंकि जितने भी लेटर आपके हैं उसमें लिखा हुआ है कि पेशावर में केपीके में हो रहा है, केपीके पेशावर, कोई वेन्यू नहीं है। अब वो आपसे बार बार पूछ भी रहे हैं कि किधर सिक्योरिटी फराम करनी है, तो पूरा पेशावर में फिर कहीं भी इलेक्शन हो रहे होंगे, इसका मतलब है कि अगर कोई आपने जाके चमकनी में कर लिया, आप ना मांगते हो सिक्योरिटी, या आपका अपना वो है, अगर ये 30 नवंबर को आप कह रहे हैं कि मुझे सिक्योरिटी दो, प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी एट द वेन्यू ऑन पोलिंग डे, चलिए खैर आप सोच लीजिए, बाद में बता दीजिएगा। जी जी भैया, आप सिंपल जवाब कर रहे हो, आप हमसे पूछ रहे हैं मौजूद है, हमने व्हाट्सएप कर दिया इलेक्शन कमीशन से। ये बात आप 6 दफा कर चुके हैं, हमने उनको तहरीरी हम आपको दे देते, इनको भी दिया हुआ, इनके पास मटेरियल है। हमने पेशावर कमिश्नर और पुलिस को कहा आपकी अगर सिंगल पैनल आया, मेंबरशिप कितनी है आपकी, हमने उनको कहा मेंबरशिप कितनी है आपकी, 8,37,950। ये आपके रजिस्टर्ड, ये मेरे रजिस्टर्ड मेंबर है, वोटर है और डेटा भी मेरे पास है। 8 लाख को पता होना चाहिए था या नहीं कि इलेक्शन कहाँ होंगे, पूरे मुल्क को पता था, हर जगह पता था, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इवन। अच्छा आप रहने दें, अभी अब हम आपसे एक छोटी बात पूछ रहे हैं, वो उसका सिर्फ जवाब दे दें ना, बहस आपकी सुनेंगे। यस, चले आगे बढ़ी मखदूम साहब, सिर्फ एक हमारा प्लीज ठहर जाइए ना, एक ऑब्जेक्शन आप प्लीज हम इनको सुन लें ना, इन्हीं पे ऑब्जेक्शन ना सर। भाई आप अगर हर वकील बहस करेगा तो हम किसी को नहीं सुन सकेंगे। सीनियर वकील बैठे हैं, कम से कम उनसे इजाजत तो ले लीजिए सर। मैं एक, या उनकी कोई अहमियत नहीं है, आपके अपने वकील हैं। लॉर्डशिप एक आपकी जजमेंट, मैं नहीं आपसे सुनूंगा भाई, आपके जब सीनियर वकील मौजूद हैं, ऐसे नहीं होता है। आप तो पार्टी है ना, आप आज हमारे सामने वकील की हैसियत से नहीं खड़े हैं, यू आर ए रिस्पोंडेंट, ठीक है। आप इलेक्शन कमिश्नर हैं, सारा इल्जामात आपके सर पे है, तो आप आज वकील नहीं हैं। या तो आप कहें कि मैं अपनी वकालत कर रहा हूँ, वो अलग बात है। आपके वकील कौन हैं? आपके वकील कौन हैं? अमित खान साहब है, तो फिर वो मौजूद हैं। ठीक है, शुक्रिया। My Lord, I was reading to your Lordship from page 55 of the order of the Election Commission, and if your Lordship turns... ये तरीकेकार खत्म कर लेना इनका, आइन में जो इनके आइन में इंदराज है, तरीकेकार क्या होता है? My Lord, that was Federal Election Commission is provided. इनका जो आइन में जो आप पहले कुछ क्लॉजेस पढ़ रहे थे 5 पॉइंट, तो इसमें और कुछ तरीकेकार है या बस ये है? Sir, page 140 I was reading to your Lordship. नॉमिनेशन फॉर्म का कोई तरीका है, मेंशन्ड है, कैसे होना चाहिए? It doesn't go into that many details, but if your Lordship sees on page 141, paragraph 5.2.2, जी, elections shall be held by direct secret ballot of the eligible party members cast to the panel of candidates as specified for each organization as given in the relevant clauses. ये रेलेवेंट क्लॉजेस बताइए कौन से हैं? ये सर आगे आते हैं, अगर आप सर आगे देखें then on page 142 नॉमिनेशन फॉर्म को भरने का क्या तरीका है, वो इनके कॉन्स्टिट्यूशन में है या कोई अलग से रूल है? No sir, it's not there. How the nomination form will be given to the... नहीं मतलब वो जो अगर कोई क्लॉजेस है बता दें, नहीं तो आगे बढ़ते हैं फिर हम। जी सर। Sir, the organization is given, sectoral organization is given at page 142 onwards. Then if your Lordship will see, thereafter there is the election commission is mentioned, and if your Lordship sees ये the central organization is mentioned. सब सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि बता दें तरीकेकार क्या? ये एक पढ़ लिए पेज 90 पे मेरे ख्याल है इनका है ये 192 my lord. नो 90 पे ये कहीं इनके कॉन्स्टिट्यूशन में नॉमिनेशन फॉर्म का हासिल करना और उसको जमा करने का कोई तरीका नहीं है, आप कह रहे हैं ना सर? अब पेज 90 पे ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का लेटर लगा हुआ है, पेज 90 पे ये इनका इलेक्शन शेड्यूल है। Yes my lord. जो जारी कर रहा है फेडरल इलेक्शन कमीशन, उस पे नियाजुल्लाह खान नियाजी साहब की साइन है। जी सर।
अब इसमें देखें ना, नोटिस इनवाइटिंग नॉमिनेशन पेपर्स फ्रॉम पीटीआई मेंबर 29/11/2023, Right. ये लेटर इशू भी 29/11 को ही हुआ हुआ इनके सिग्नेचर से। Nomination forms to be received by returning officers, appeals against objections, display of names. नहीं तो ये नॉमिनेशन पेपर का कोई वो है फॉर्मेट या क्या उसको कहते हैं प्रोफॉर्मा? Sir, it's not there in the constitution. It's not there in the rules issued by the election commission. But what about very this letter, because इसके अंदर ये मेंशन है ना, प्रोसीजर पूरा इन्होंने किया हुआ है ना। जी सर। अपील अगेंस्ट ऑब्जेक्शंस और रिजेक्शन ऑफ नॉमिनेशन फॉर्म, डिस्प्ले ऑफ नेम ऑफ कंटेस्टिंग पैनल, पोलिंग डे एट पेशावर खैबर पख्तूनख्वा। ये रिटर्निंग ऑफिसर्स कौन थे? नॉमिनेशन फॉर्म्स टू बी रिसीव्ड बाय रिटर्निंग The ऑफिसर्स। returning officers were, my lord, if your lordship may turn the page at page 91. The returning officers are nominated. They are all nominated by the Chief Election Commissioner. For the Federal Election Commission, एक सेंट्रल इलेक्शन है, एक प्रोविंशियल बलूचिस्तान, केपीके, पंजाब एंड सिंध, इसके लिए 4 अलग अलग। 4 है सर। फिर अगर आप अगला सफा देखेंगे सर, तो प्रिजाइडिंग एंड असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स आर नॉमिनेटेड। दे आर 10 इन नंबर। ये डिटेल नहीं है कि वो कितने लोगों ने कंटेस्ट किया है या नहीं किया है, या फॉर्म दाखिल करके विड्रॉ कर लिया तो अनअपोज आ गए, जो नॉर्मली होता है ना कि आप विड्रॉ कर लेते हो कि भाई ठीक है, आई विल नॉट कंटेस्ट। Not on our record, my lord. Not on our record. Even the withdrawal of the other panels, we don't have any records. Withdrawal panels की बात करें। Withdrawal कहाँ है withdrawal? हमारे पास नहीं ये, we don't even have a letter showing कि बाकी panels ने withdraw कर दिया। Announcement कहाँ है? जी। So, my lord, these are there. Then, if your lordship may go back to page 192, how the Federal Election Commission is to conduct itself. Secondly, you have taken my book, yeah, that's so good. My lord, Federal Election Commission. If an election commission shall be formed comprising following Federal Election Commissioner. बात कर चुके हैं आप। सर, अगर आप रिपीट ना करें कुछ। नहीं सर, ठीक है। अगर आप सर पैराग्राफ 2 onwards देख लें, and then the functions, and then paragraph. लास्ट इलेक्शंस कब हुए थे इनके? इस इलेक्शन से पहले ये कौन से इलेक्शन? PTI के इलेक्शन सर लास्ट पोलिंग डे 2 दिसंबर के इलेक्शन से पहले कौन से इलेक्शन हुए हैं? 2017, ये डेट बताइए। 19th June 2017। 19 जून 8 जून 2, तो ये कह रहे हैं 22 को हुए, आप कह रहे हैं 17 में हुए हैं। What happened was, नहीं वो दिखाइए हमें, रिकॉर्ड से बताइए। my lord, the 8th June 2022 intra-party elections were declared void by the election commission. My lord, the first order of the of the election commission deals with it, and that order of the election commission is at page 428 in part 2 of your lordship's file. 428। ये क्या कह रहा है ऑर्डर? Sir, if your lordship will see, relevant page 435, paragraph 424. 435 paragraph. Just paragraph 24, just I'll read 5 lines and then I'll move on from here, my lord. We scrutinize all the documents provided by the CEC in respect of meetings of the General Council, as well as the alleged intra-party elections of various office bearers, but we did not satisfy therefrom the available records submitted by CEC that either the National Council dissolved at ever convened its meeting, or on 10th of June 2022 at this juncture. It would be pertinent to refer to various letters. Your lordship may different dates for that election. each of these letters which are mentioned. कंक्लूड क्या कर रहे हैं? ऑर्डर क्या रहे हैं? Sir, इनको दोबारा टाइम दिया था। different dates were given to them, and वो वाला पोर्शन पढ़ देना। my lord, I'll read the कंक्लूडिंग क्या कर रहे हैं? letter dated 10th. लीनियंट व्यू लेके इसमें उन्होंने कहा है कि वो तो eventually यही करते हैं।
पैराग्राफ 34 पढ़िए, आखिरी पैराग्राफ है ना जी सर। इसको थोड़ा सा जल्दी करें ना। All right. Keeping in view the aforestated reasons, we are confirmed in our views that the respondent party failed to hold transparent, just and fair intra-party elections in accordance with its prevailing Constitution 2019, allegedly held on 10th June 2022, which is highly disputed, objectionable, which could not be accepted at all. Therefore, it is held that respondent party has failed to hold its intra-party election within the extended period of 1 year till 13th of June 2022, but we, instead of taking the final step to invoke the provision of section 215(5) of the Election Act, 215(5) क्या है? 215(5) ये कहता है सर कि अगर आपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन से कंप्लाई नहीं किया और उसको 209 के साथ पढ़ के कि इलेक्शंस जो हैं वो इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, सो देन यू विल बी डिनाइड अ सिंबल. दैट्स वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस. पढ़ते रहिए प्लीज. A lenient view is taken with direction to the respondent party to hold its intra-party election strictly in accordance with the prevailing party constitution within 20 days positively, and its result along with all the required documents including Form 65 shall be submitted thereafter the election within 7 days before the commission. So this is taking a lenient view. They said hold elections. आगे पढ़िए. In case the respondent party fails to comply with directions of the commission and fails to hold its intra-party election within the prescribed 20 days, which will run from today, the date on which this order is announced, in such eventuality, the respondent will suffer the penal consequences of section 215, subsection 5 of Election Act accordingly, and would be ineligible to obtain an election symbol for election to Majlis-e-Shura Parliament. ये चैलेंज हुआ ऑर्डर? Sir, this was challenged before the Lahore High Court in a writ petition number 5791. एक सेकंड. In writ petition number 5791 of 2023. 5791 of 2023. ऑर्डर किधर है? No, my lord, this is, I'm sorry, I've given you, lordship, the wrong number. Sorry, in WP number 81171. 811 of 2023. दोबारा क्या ये 81171 of 2023. जी. This, my lord, is at page 644 of your lordship's file. पार्ट 3. Part 3. Yeah, this left page to another door. 644. 644. Copy वालों को ये रखा है. This is a copy of writ. Where is Yes, the my order? lord. Yes, my lord. Then, no, my lord, no order is passed. What happens is that this is referred to a 5-member bench of the High Court. At 6:55. ये जो क्वेश्चन ऑफ मेंटेनेबिलिटी पे एजेंट हुआ ये. जी सर. ये पढ़ते हैं, ये पढ़िए ऑर्डर. Sir, through the instant constitution petitioner, the petitioner has made the following prayer. In view of the foregoing, it is respectfully prayed that this honorable court may be pleased to declare and hold that the impugned order of 23rd November 23 is misconceived, quorum non judice, and set it aside inter alia on facts and grounds as urged herein above. Declare, find, and hold that the intra-party elections held on 10th of June 2022 had been validly held in accordance with the party constitution and law. Declare that amendment to Article 5, Clause 5 has been validly and lawfully made in accordance with law and party constitution. In the meanwhile, this court may kindly be pleased to suspend the operation of the impugned order dated 23rd November 2023 and restrain ECP from passing any further adverse order till final disposal of the title petition. Notice is issued. If your lordship will then turn the page to page 657. This was the last order prior To be heard with WP's 332. This, as your lordship will see, is fixed today. ये 332 क्या चीज है? Page 2 of this order, 656, इसमें लिखा है कि ये केस सुना जाएगा
एक और केस के साथ WP there is some other case. ये ऑर्डर तो ये बताता है मखदूम साहब 8/12/2023 का कि ड्यूरिंग दैट पीरियड दे हैव ऑलरेडी कंडक्टेड फ्रेश इलेक्शंस। ये सर ये 657 इसमें लिखा है ना बीच में व्हेन ये मैंने नहीं पढ़ा है। ये एक 657 सर। अच्छा, ये ऑर्डर तो फिर ये 15/12 का आपने पढ़ा है? जी सर, 8/12 का ऑर्डर उससे पहले का सर जो है, इसमें भी WP 332 का जिक्र है। जी मगर उससे ऊपर जो लिखा है जी, when confronted with ये 332 WP क्या चीज है? sir, there is another petition pending before a full bench of the court relating to other matters. I am not fully aware of it, what it is about. अच्छा, ये जो पिछले इलेक्शन हुए थे इनके, जो आप कह रहे हैं जायज नहीं है और वो कह रहे हैं जायज है, उनके रिजल्ट क्या है? इलेक्शन रिजल्ट My lord, आप कह रहे हैं ना कि ये जो इलेक्शन, इनका कहना है कि ये 8/6/2022 के जो इलेक्शन थे इनके, ये सही थे। आपको कहना है ये इलेक्शन सही नहीं थे। My lord. उसके रिजल्ट्स क्या हैं? उसका सर, उसके नतीजे पे they held another election. नतायज किधर है? कौन जीता? This is the election which that is the election which your lordship saw where everybody was नहीं, again. ये तो अभी के इलेक्शन की बात हो रही है ना। मैं 8/6/2022 के इलेक्शन का पूछ रहा हूँ। वो नतायज कहाँ है उसके? आप सवाल समझ गए? My lord, yes. They are not on the record. The reason why we have not brought them on the record is that they accepted the order of the election commission and they have. वो वही लोग हैं जो कि ये मौजूदा हैं या अलग लोग थे? My lord, I'll have check. We can check, but खान साहब आप बता सकेंगे, इस पर रोशनी डाल सकेंगे? जो 8/6/22 का जो आपका इलेक्शन हुआ था, उसमें इलेक्टेड कौन हुए? आप बकौल आपके कौन लोग इलेक्टेड हुए उनसे? हाँ, नहीं वो फर्क है जो मौजूदा इलेक्टेड लोग हैं वो पता नहीं। ये दे दें, मैं बताता हूँ वॉल्यूम में पढ़े। वो उस ऑर्डर में लिखा, उसी ऑर्डर में सर लिखा सर इन्होंने ये इलेक्शन कराया एंड देन मिस्टर नहीं बेशक देखिए, हम आपको बिल्कुल, आपकी बात जायज है, हम आपको वक्त देंगे, मगर जैसे जैसे सवाल उठते जा रहे हैं तो वो आप नोट करते जाइए, या फिर अगर आपके फौरन जवाब है तो दे दीजिए, क्योंकि ये 3 वॉल्यूम्स इनने फाइल किए हैं, हमें भी बड़ी दुश्वारी हो रही है इसको पढ़ने में। तो अगर किसी चीज का जवाब है तो दे दीजिए, अगर जवाब नहीं आप लाना चाहते हैं बिल्कुल आप जरूर फाइल कीजिए। नहीं, आप नोट करते जाइए ना ये चीज। तो अब सिर्फ हमें ये बता दीजिए कि ये जो नताइज थे जो 8/6/2022 के, ये 8/6 इलेक्शन डेटेड इसमें पेज 412 पे है। 2022 10 को हुए, 6-8 को हुए, हमें 10/6/2022 के थे ना आपके पिछले इलेक्शन। इसमें पेज 412 पे है जनाब। प्रेयर में हाईकोर्ट की प्रेयर में लिखा है 10/6/2022। 4-1 एट दैट टाइम गौहर अली खान साहब 4-1 चेयरमैन गौहर साहब थे। ये जो आपका 412 प्रॉब्लम ये पेज 412 देख लीजिएगा। 412 हाँ ये आ गया ना, नहीं ये तो कुछ और है। नहीं 412 सर, इधर पढ़ दें अगर आप पार्ट 2 में। हाँ पढ़िए प्लीज जी, रेफरेंस वीसीबी लेटर डेटेड सो जनाब 412 पे हैं आप। नहीं, अगर इलेक्शन की सिर्फ डेट का इशू है तो वो तो आपके 10/6/2022 को हुए थे। वो आपकी ये तो प्रेयर से पढ़ रहा हूँ, आपकी जो कुछ और हाईकोर्ट में प्रेयर है ना, इलेक्शन कमीशन तो जो आप प्रेयर है, नहीं जवाब नहीं, जो आपकी प्रेयर थी हाईकोर्ट में, लाहौर हाईकोर्ट की बात हो रही है। नहीं, आपने ये कहा था कि जो हमारे पिछले इलेक्शन 10/6/2022 के थे वो ठीक थे, उनको वैलिड डिक्लेयर करें। वो जो पिटीशन पेंडिंग है आपकी हाईकोर्ट में, जो ये मखदूम साहब बता रहे हैं 5 मेंबर के सामने जो था इशू, जी वो फिर इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने इसको इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया ना, फिर आपने फ्रेश करा लिए, फिर उसके बाद करवाए दूसरे। ये क्योंकि they gave us 20 days to do that, so we had to do it within that prescribed time, and we did it, which they are challenging now. सेकंड, जरा मैं जरा भी कंफ्यूज हो गया हूँ। बकौले आपके 10/6/2022 को इलेक्शन हुए जी, इनका कहना था वो सही नहीं है जी, इनने ऑर्डर पास किया, मगर वो ऑर्डर आपने चैलेंज कर दिया हाई कोर्ट में, आपने वो ऑर्डर माना नहीं। किया, लेकिन कंप्लाई भी किया जी, कंप्लाई भी किया हमने उसी के तहत। तो फिर आपका कहना है ये जो पिटिशंस आपकी जो फाइल्ड हैं वो
आपने विड्रॉ कर ली है जो हाई कोर्ट में पड़ी है, लाहौर हाई कोर्ट में WPR1171। लेकिन we have already complied with the order, so therefore that becomes infructuous. नहीं, मगर कोई इतला तो दे ना हाई कोर्ट को जा करके। नहीं सर, दी है, इसमें मेंशन की होगी। आप पेज देखिए, पेज 657, पेज 650 है। इसमें आपका ये 81171 ऑफ 2023 ये पिटीशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये आपसे पूछा उन्होंने, व्हेन कन्फ्रंटेड विद द क्वेरी दैट सिंस इंटर पार्टी इलेक्शंस ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ परसुएंट टू इम्प्यून ऑर्डर डेटेड 13 सितंबर 2023 पास बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हैव बीन हेल्ड as to how this petition is maintainable, उस पर आपके वकील साहब ने जवाब दिया कि ये अभी हम इसको आगे already subjudice to full bench of this court। तो ये नॉलेज में आ गया हाई कोर्ट। नहीं, ये पूरा आगे लिखे ना, submits Submit that the similar question is already sub judice before the learned full bench of this court in WP number 332 of 2023 and other allied matters. Proprietary demands that instant petition be also be referred to the learned full bench. ये हुआ है बस इसके में। मुझे देखें, अब मैं जरा बिल्कुल कंफ्यूज हो गया हूँ। एक इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर आपके किया, कब ऑर्डर है इनका इलेक्शन कमीशन का? ऑर्डर माय लॉर्ड 428 पे जो पेज है उसका तारीख है 23/11/2023। 23/11/2023। ये नहीं वो जो रेट पिटीशन में चैलेंज किया, पहला वाला तो यही है ना, डिक्लेयर होल्ड दैट इम्प्यून ऑर्डर। The matter was heard on 13th September। एक सेकेंड, आपका ऑर्डर किधर इलेक्शन कमीशन का वो देखा जो आप पहले पढ़ रहे थे? Page 428। 428। This is the order passed on 23rd November 2023। 23rd नवंबर। ये डेट कहाँ लिखी है? सर डेट से पढ़ के बता रहा हूँ आपको, प्रेयर क्लॉज में जो इनकी है ना हाई कोर्ट में। Date of hearing was 13/9। डेट ऑफ हियरिंग टुडे, अनाउंस टुडे। तो इसकी तारीख क्या है इस ऑर्डर की? इस ऑर्डर की तारीख सर 23/11 है, ये 428 पे लगा हुआ है। 23/11/2023 है जी सर। और नीचे उन्होंने साइन पे डेट नहीं डाली है, बट वो डेट ऑफ हियरिंग ऊपर लिखा हुआ है। जी सर। तो उन्होंने एक साथ ऑर्डर को चैलेंज भी किया और एक साथ उन्होंने इलेक्शन भी कर लिया। यस मैडम। ये हुआ? यस सर। तो फिर उन्होंने ये दरख्वास्त क्यों की हाई कोर्ट को कि मेरा ये इसको पेंडिंग रखें? वो कह रहे थे कि जिसको हम विड्रॉ कर रहे हैं। They could have, but they नहीं, मतलब मुझे इसकी जरा लॉजिक बताइए खान साहब। वो फिर अगर आप इलेक्शन करवा रहे हैं तो फिर उसको आप वापस ले लें, बात को खत्म करें, उसको जिंदा क्यों रख रहे हैं पिटीशन को, लाहौर वाली को? To the contrary, they had it referred to a larger bench of 5 judges. Am I missing something? I can't follow this. Sir, we don't know what was the logic. The elections had taken place, but they nevertheless elections. Gauhar will explain why that was. जी फरमाइए। The see-through petition had actually been filed when Election Commission was trying to remove the chairman Imran Khan from the position of chairmanship of the PTI. And they were making that excuse. आप देखिए ना, अब आपने आगाज ही बात का कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट से किया है। No, Your Honor. आप हमें सिर्फ ये बता दें जी कि वो जो पिटिशन आपने जो फाइल की थी, जब वो क्यों आपने पेंड हो गई? उसको आपका क्या बना, आपने उसको जिंदा क्यों रखा है? Your Honor, वो उसके साथ क्लब है, वो सेम पिटीशन है, डिस्क्वालिफिकेशन का इशू है क्योंकि इसमें चेयरमैन ने इलेक्शन नहीं लड़ा, इसलिए वो उसके साथ हमने क्लब करवाया कि लीगल इश्यूज पे। यस 332 है। यस योर ऑनर। खान साहब मुझे बात समझ नहीं है, आप मुझे समझा दें खान साहब। आई हैव नॉट अंडरस्टूड, जरा मुझे नहीं, जरा समझा देना बात समझ नहीं आ रही है। बात की इजाजत, हमने वो पिटीशन उसके साथ इसलिए क्लब करवाया कि जो ऑब्जर्वेशन इलेक्शन कमीशन ने दी थी। पहले बताया 332 है क्या? 332 वो पिटीशन है जिसमें हमने चेयरमैन पीटीआई के रिमूवल फ्रॉम चेयरमैनशिप के केस के सिलसिले में जो नोटिस आया था उनको, इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिस इशू किया था इमरान खान को। यस, तो उसका तो इससे इलेक्शन से ताल्लुक नहीं है ना। योर ऑनर, डिस्क्वालिफिकेशन का केस चला रहे थे
कि हम क्यों ना आपको रिमूव करें फ्रॉम चेयरमैनशिप। वो तो हम बात समझ गए, वो केस ऑर्डर है ना यस योर ऑनर, में, इससे तो कोई ताल्लुक नहीं। इलेक्शन की बात पूछ रहे हैं आप। योर ऑनर ताल्लुक है, वो डिस्क्वालिफिकेशन का बेस बना के चेयरमैनशिप से हटाना चाह रहे थे। इसमें जब नोटिस आया कि आपके इलेक्शन नहीं हुए तो उसमें उन्होंने वो फैक्ट्स का जिक्र किया, लीगली इनकरेक्ट कराया। तो जब कोर्ट में चला गया, कोर्ट में पढ़ा गया तो उन्होंने कहा सेम इश्यूज इन्वॉल्व है, लिहाजा लीगल साइड पे उसके साथ क्लब कर देते। अदरवाइज वो इंफ्रैक्चर्स हो चुका है क्योंकि हमने इम्प्लीमेंट किया टू द एक्सटेंट ऑफ इंट्रा पार्टीज इलेक्शन। तो अच्छा एक सेकंड है, एक सवाल और उठेगा जी योर ऑनर। एक मैटर आपने खुद लाहौर हाई कोर्ट गए, 5 मेंबर बेंच बनवाई, इलेक्शन का मैटर है, इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर पास किया है कि आप दोबारा इलेक्शन कराएं, आपका मौक़िफ़ था इलेक्शन सही हो, फिर आपने कहा चलो फिर भी कर देते हैं इलेक्शन दोबारा, खुश हो जाएं, तो फिर आप लाहौर हाई कोर्ट ही में रहते हैं ना, फिर आप पेशावर क्यों चले गए? योर ऑनर हमने इलेक्शन पेशावर में करवाए थे, इलेक्शन पेशावर में करवाए थे, तो उससे तो कोई मतलब मेजॉरिटी ऑफ रीजन। खान साहब जरा मुझे कानूनी हम क्यों गए थे योराना, फोरम शॉपिंग करने नहीं गए थे। इस्लामाबाद में हमारी लीडरशिप आपने इस्तेमाल किया, मैंने नहीं इस्तेमाल किया। मैं ये योराना सिर्फ एक मिनट, अब आप देखिए ना, एक कोर्ट के पास एक लिस्ट पेंडिंग है, यस योराना, इलेक्शन ही के मुताबिक है, और ना सिर्फ आम बेंच है, उन्होंने 5 मेंबर बेंच आपके लिए बना ली है जी। अब वो मैटर पेंडिंग होते हुए दूसरा हाई कोर्ट देख कैसे सकता है इस बात को, ये इसका जरा कानूनी जवाब दीजिए। योर ऑनर मैंने अर्ज ये किया कि टू द एक्सटेंट ऑफ इंट्रा पार्टी इलेक्शंस वो पिटीशन इन्फ्रक्चस हो गई जब हमने उसको इम्प्लीमेंट किया। वही ऑर्डर है ना, ऑर्डर तो वही इलेक्शन कमीशन का, योर ऑनर वही ऑर्डर है, लेकिन उसको जब हमने अमल कर लिया उस पे, जब हमने इम्प्लीमेंट किया तो हमने इलेक्शन कराए पेशावर में, पेशावर में इस इलेक्शन ना इंफ्रक्चर्स होने की, ये मेरे हिसाब से आपकी बात लॉजिकल है, मगर इस ऑर्डर में आपके वकील ने कहा कि नहीं इंफ्रक्चर्स हुई है। योर ऑनर वो लीगल साइड पे इंफ्रक्चर्स दोबारा पढ़ते हैं ऑर्डर। Sayyid Ali Zafar advocate representing the petitioner submit that since similar question is already sub judice before the learned full bench of this court in WP number 332 and other allied matters, propriety demands that instant petition be also referred to the learned full bench. Yes, Your Honor, High Court raised the question. High Court has raised the question that it has become sub judice because you have already complied with the order. Yes. But if your counsel said that it is not sub judice, let it be fixed before the same 5-member bench. Your Honor, yes, to the extent of holding of What you are intra-parties arguing, that elections. is correct. Yes. According to legal situation, it has Yes. become infructuous. So that has become infructuous to the extent of intra-parties elections, but This since is the questions were this is the involved. divergent arguments between you and the earlier counsel. Your Honor, which is the legal appearing questions before the- involved in the petition were alive, so they were kept to the extent of those legal questions, and that's the reason that is being clubbed and referred to the full court. We held the election, they were full, the election were held at Peshawar. Your Honor, the entire leadership was unable even to come to Islamabad. आपके अपने इलेक्शन कमिश्नर ने कहा they were not held in Peshawar, they were held in some place called Chamkani. Your Honor, हमने अरेंजमेंट करवाए थे, इनको सिक्योरिटी मांगी, हमने पेशावर जी योर ऑनर जी। Are you arguing as party, as counsel, what? योर ऑनर जो आपकी असिस्टेंस हो सकती है मैं उसका जवाब हम तो सीनियर काउंसिल से लेना चाह रहे हैं। We have noted all the questions. मैं सिर्फ Put it in writing. देखिए खान साहब, देखिए let's go by constitution and the law. जी हम अभी उस पे नहीं आए कि आपने सही किया गलत किया, इन्होंने सही किया गलत किया। जी आप इलेक्शन कमीशन ने एक ऑर्डर पास कर दिया, सही किया गलत किया वो भी हम नहीं देख रहे हैं। वो ऑर्डर को आपने जाके लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया, जहां से एक पहले से पिटीशन पेंडिंग पड़ी थी, आपने कहा इस पिटीशन को उसको साथ लगा लें, चलें, ये भी ठीक है। आपकी रिक्वेस्ट पे लार्जर बेंच बना दे, उन्हें 5 मेंबर बेंच बना दी। फिर अली जफर साहब पेश हुए और उन्होंने कहा जी कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि अब तो आपने इलेक्शन कर लिए, तो अब आप ये पिटीशन इसको खत्म कर दें। उन्होंने कहा नहीं, इसको आप रखिए सब जुडिस विथ फुल बेंच। अब ये मैटर इलेक्शन का मैटर है, चलें। अब या तो आप इंतजार करते कि हाई कोर्ट, या तो आप इसको वापस ले लेते, वो आप नहीं कर रहे हैं। इंफ्रक्चर्स खुद से नहीं होती ना, कोई आएगा कहेगा फिर ऑर्डर उस पे पास करेगा जज, इंफ्रक्चर्स हो गई है, वापस हो रही है, जो भी आप कहना चाहें। उस पिटीशन को आप जिंदा रख रहे हैं, आप जाके पेशावर हाई कोर्ट कैसे पहुंच गए, ये मुझे समझ नहीं। देखिए ये तो सब्सिक्वेंटली जब इलेक्शन हो गए और उसको इलेक्शन कमीशन ने नल वॉइड डिक्लेयर किया, फिर हम पेशावर हाई कोर्ट गए।
तो लाहौर हाई कोर्ट क्यों नहीं पसंद आया? नहीं, लाहौर इसकी वजह पहले आपको वही, आप एक कोर्ट जाते हैं फिर दूसरे जाते हैं, नहीं तो सर, अब वो मतलब ये नहीं सर, उसका वजह है, उसकी वजह ये, जब हमने इलेक्शन कराए हमें कहीं और सिक्योरिटी फ्राहम नहीं की जा रही थी, सिर्फ पेशावर में हमें सिक्योरिटी फ्राहम की गई। आप मांग लेते ना कोर्ट से बात कि मुझे सिक्योरिटी नहीं जा रही है, हम अगर हाई कोर्ट नहीं देती हम आपको देते हैं। हाँ, ये बताएं, ये ना बताएं खान साहब, मुश्किल सवाल आप इन पे छोड़ देते हैं। सिक्योरिटी का योराना, ये मुश्किल सवाल हम हमेशा सीनियर काउंसिल से पूछते हैं। ये मुझे राइटिंग में जो आप सारे जो तो आप दीजिए, बिल्कुल दीजिए, जो आप देंगे राइटिंग में आपके सामने। नहीं, मगर देखिए ना, फिर मसला ये है ना कि ये एक आम केस होता है ना, ये है टाइम रिलेटेड केस, ये आपको सिंबल नहीं दे रहे हैं, आपको एक सिंबल चाहिए, तो हम तो चाह रहे हैं कि अगर आपका सिंबल बनता है आपको फौरन मिल जाए, तो हम आमतौर पे तो आपको बहुत टाइम दे देते, मगर इसमें फिर आपको सिंबल नहीं मिलेगा, हम ये नहीं चाह रहे, इसीलिए हमने कहा आप जब चाहें हम सुनने के लिए तैयार हैं। दूसरा, हमने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को भी मैंने अपने कोलीग्स को कहा कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है, इसको पहले कर लेते हैं, तो ये हमें जब तक ये इस पे, अब देखिए वही सारे लोग हैं, सैयद अली जफर साहब भी वहां मौजूद हैं, वो भी नहीं बता रहे हमें कि क्या बना उस केस का, ये तो नहीं कि दूसरे काउंसिल हैं, वही काउंसिल है ना, सारे पेंडिंग है। विल सबमिट इन द मॉर्निंग सर, चलिए, मगर ये देखिए, अब आप गौर साहब ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया जो मैं नहीं करना चाह रहा था, फोरम शॉपिंग, जो कोर्ट्स जनरली फ्राउन अपॉन, तो यहाँ से रिलीफ नहीं मिली तो जाके वहां फाइल कर दो, वहां से नहीं मिली तो दूसरे कोर्ट में चले जाओ, तो फिर ये फिर सिस्टम को खराब करता है। तो देखिए, अब आपने ठीक है लाहौर चले गए, फाइन, तो फिर वहीं रहिए ना लाहौर में, फिर आप क्यों जा रहे हैं पेशावर, या फिर आप जाइए जहाँ के इलेक्शन कमीशन मौजूद है जो कि इस्लामाबाद है। तो देखिए, अब आप कहें जी मैं इलेक्शन करता हूं जाकर फलां जगह, मैं इसकी पिटीशन करूंगा, आप अपना कॉज ऑफ एक्शन नहीं क्रिएट कर सकते। कॉज ऑफ एक्शन इज क्रिएटेड बाय लॉ, यानी कि मैं ये काम करूंगा तो मैंने जो काम किया उस बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है, जनाब अच्छी तरह जानते हैं भाई, आपके सामने पेंडिंग, बात पूरी चलो, हाँ, आपके सामने पेंडिंग है केस जिसमें हमने अर्ज किया है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे, हमें हरेस किया जा रहा है, हमें कहीं सिक्योरिटी नहीं दी जा रही है, हमारे लोगों को अंदर किया जा रहा है, सारी बातें कही। हमारे साथ जो हो रहा है इन दीज सर्कमस्टांसेस में, ना इस्लामाबाद में हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की थी ना लाहौर में जहां हम इलेक्शन करा सकते। सो पार्टी ने डिसाइड किया कि द ओनली प्लेस वेयर सिक्योरिटी इज प्रोवाइडेड इज इन पेशावर, एंड देयरफॉर वी हेल्ड द इलेक्शन इन पेशावर। When elections were held in Peshawar, territorially it was only right and proper to file it before the Peshawar High Court. So see, these are the various stages of a case. देखिए खान साहब जी, एक होता है इंतजामिया, इसमें अभी आप एक है इलेक्शन कमीशन, वो एक आईनी इदारा, एक है अदालतें जो कि आईनी अदालतें हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। आप आए हमारे पास, अली जफर साहब उस केस में थे और इलेक्शन की बात हुई, हमने उस केस का फैसला 12 दिन में कर दिया कि इलेक्शन हो। 8 फरवरी की तारीख तय हुई, सब लोग खुश थे, आप भी की पार्टी खुश, इलेक्शन कमीशन खुश, सदर खुश, किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं कहा, अटॉर्नी जनरल खुश, चारों एडवोकेट जनरल खुश, सब ने ये मुतफ़िक़ा तौर पे ये हो गया। तो जब भी कोई, अब आप यकीनन आपके खिलाफ बहुत सारी चीजें होंगी, मगर कोर्ट उस वक्त आएगा जब कोई आए तो उसके सामने ना, दूसरे केस में कंटेम्प्ट मैटर में आए, वो एक और बेंच ने फॉरेन ऑर्डर पास कर दिया कि जी सारी सहूलतें जैसे अकॉर्डिंग टू लॉ दी जाए। उसके बाद कंटेम्प्ट आई, फौरन हमने ले ली कंटेम्प्ट एप्लीकेशन, जो उन्होंने केस बनाया हमने उनको रिपोर्ट मंगवा ली। तो ये जहां तक हमारा ताल्लुक है, या तो बताएं हमने कोई काम नहीं किया। लाहौर हाई कोर्ट को आप गए, आपने कहा जी लार्जर बेंच बना दो, उन्होंने 5 मेंबर की बेंच बना दी, फिर आप उसको अबैंडन कर रहे हैं ना। या तो आप कहें कि मैं वापस देता हूं केस खत्म, मगर उस केस को लटका के कहीं और कैसे जाना है, ये जरा समझाने की, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। सर उसमें वो वर्चुअली इंफ्रक्चुअस हो गया, इसलिए तो फिर एक लाइन की दरखास्त देना थी ना, वो तो कोर्ट खुद आपको कह रही है आपने इलेक्शन कर लिए तो ये तो मैटर खत्म हो गया। आपने कहा नहीं नहीं, ये फुल बैंड को आप बनाएं और ये हम करेंगे। तो ये तो आपने फिर आपने सॉरी टू यूज, मगर ये तो फिर आपने अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मार दी, फिर आपने अपने आप को रोक
दिया लाहौर हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में, आप उधर से निकल जाते, आप कहते हैं कि खत्म हो गया जी, थैंक यू वेरी मच। उसके बाद छुट्टियां हो गई थी, केस लगा नहीं उसके बाद। जो भी बात है, मगर वो लाहौर हाई कोर्ट ने सीज तो कर लिया ना, लिस्ट वहां पड़ी हुई है। एक इलेक्शन का मैटर लाहौर हाई कोर्ट में पड़ा हुआ है, एक इलेक्शन का मैटर इस्लामाबाद में पेशावर में चला गया, तो अब कॉन्ट्रडिक्शंस भी आ सकते हैं। ये तो कभी नहीं करते हैं ना कि साहब ये शॉर्ट ऑर्डर है, ये जुरिस्डिक्शन का इशू उठाए हाई कोर्ट के सामने, पेशावर हाई कोर्ट में, वेदर the writ is maintainable according to the territorial jurisdiction of the court or not. Yes, it is. Because we have no order, we have only short order. We do not know what are the reasons, if any, assigned by the learned bench of the... Yes, sir. Because in this case, is there a question of territorial jurisdiction? I'm sorry to interrupt you. Why? I was counsel for the ECP. You raised the objection? In which case? In which case? In my lord, writ petitions from which this judgment, the impugned judgment arises, my lord. Yes. And to answer my lord's question, not only did I raise the objection of forum shopping based on the Tirimzi judgment, but several of the complainants who were also heard, they also raised the same objection that in the first instance, my lord, the order dated 23rd/11 is impugned in Lahore High Court. Then the order dated 22nd, which arises from that, is impugned in Peshawar High Court, and through an identical petition also impugned in the Lahore High Court. So there is an identical petition to petition 617. That's not party's petition. This is It is absolutely incorrect. My lord, that petition. Making incorrect statement. May I complete what I'm saying? चलिए आप नोट कर लीजिए, that can be My lord, responded that because petition is since the issue of jurisdiction. नहीं तो ये जरा ये तो तय्युन कर लें, WP 81171 of 2023 and WP 332 of 2023, are they still pending in the Lahore High Court? Can we have a clear statement on that? My lord, yes. आप बताएं खान साहब, आप you are the petitioner. According to the last order, both are pending, I think. Pakistan Tehreek-e-Insaf is the petitioner in both these petitions apparently. ये पेंडिंग है, आज की तारीख में क्या पोजीशन है? 332 में योराना PTI नहीं है, उसमें इमरान अहमद खान नियाजी है. Is it pending or not? Yes, pending. दोनों pending. दोनों pending हैं. That is his personal grievance on that. Personal grievance. चले वो भी अलग कर दिया, मगर आपने उसको क्लब कर दिया 811171. तो how, when the matter is pending adjudication before a court of law, how can you go out of the territory of that court? Your Honor, no subsequent cause of action arise हुआ है, subsequent election take place हो गया, जिस तरह बंदा convict हो जाता है, सजा काट के बाहर आ जाता है, अपने conviction से कोटल चाहता है, तो ये वही है. हमने कहा जो फाइंडिंग दी है पहले में वो भी गलत थी. पहले डिसीजन इस बात पे सेट असाइड कैपेसिटी में हमें, आप वकील आज हैं या मैं आपकी सिर्फ जरा देखिए ना, ये जरा देखिए, ये खान साहब ये बहुत टेक्निकल क्वेश्चंस है ना, तो हम जरा खान साहब की अगर सीनियर काउंसिल का फिर फायदा हम नहीं उठा रहे ना, अगर आप या फिर वो भी नहीं बात कर सकते हैं, वो समझते हैं कि वो खामोश हैं, तो हमें कोई इतराज नहीं, आप चुन लें, मगर हमें आप उनके कान में भी बता सकते हैं खान साहब के, मगर जरा देखिए लीगल इशू को हम जरा रिजॉल्व तो कर लें ना. तो ये देखिए, मेरा जो तरीकेकार है शायद लोगों को पसंद भी नहीं है, अगर मेरे या पसंद है पता नहीं, जो मेरे जहन में कोई कानूनी लीगल इशू खड़ा होता है मैं खामोश नहीं रहता हूँ, मैं बता देता हूँ कि ये आप अटेंड कर लें. ठीक है, जब मैं वकालत करता था मुझे वो जज पसंद होते थे जो मुझे बता देते थे कि भाई ये इशू है. कुछ लोग खामोश रहते थे, बाद में कुछ फैसला करते थे, पूछा भी नहीं मुझसे. तो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ में है क्या जो जनाब ने सवाल पूछा, हम उसमें जनाब को सेटिस्फाई करें. फैक्चुअल प्ली है ना, इसमें तो कोई लीगल प्ली क्या होगा कि आपने विड्रॉ क्यों नहीं की, और या आपने उसको केस को चलाया क्यों नहीं, या आप दरखास्त देते कि आप केस मेरा क्यों नहीं चला रहे हैं कि भाई बहुत अहम केस है जल्दी करें. Okay. So can we continue with जी मखदूम साहब फरमाइए. My lord, just to complete the sequence of what your lordship was presently dealing with, even after this second order was passed, in spite of the pendency of the petition in the Lahore High Court in the first order, this second order was challenged before the Peshawar High Court. It was more or less within a few days also challenged before the Lahore High Court. The Lahore High Court dismissed the petition,
क्या एक और पिटिशन है? जी जी, दूसरे ऑर्डर के खिलाफ, दैट इज माय लॉर्ड द पिटिशन नंबर 287 ऑफ 2024 287 ऑफ 2024. नहीं, पहले पिटिशन दिखाई कहाँ है? Sir, this is ऑर्डर at page दिखाई 615 to page 615 to 630. ये एक चीज अजय, ये दो केसेस मालूम कीजिए लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग है या नहीं? ये करने की verbatim है सर. Peshawar at 616, your lordship will see they claim to be ex-secretary general and candidate PTI Gujranwala. ये उमर आफ्ताब हैं और आफ्ताब और बिलाल नासिर। page 616 and Bilal Nasir. तो ये तो पीटीआई नहीं है. No, they are, he's, if your lordship will see, son of Chaudhry Dellu, president PTI Sheikhupura. वो उन्हीं के ही हैं, वो उसमें लिखा हुआ है. Is the president PTI Sheikhupura. This पिटिशन का नंबर क्या है? This petition number, my lord, is नील लिखा है. 287 of 2024. इसमें क्या उनकी प्रेयर है? Identical to 616. Identical, I will read out to your lordship. That's at page 629. In view of the foregoing, it is respectfully prayed that this court may kindly be pleased to: 1. Instant petition may kindly be accepted, hold and declare that the impugned order of ECP dated 22/12/2023 is without jurisdiction, without lawful authority and illegal, and as a consequence thereof set it aside forthwith. In the meanwhile, suspend the impugned order dated 22/12/2023 forthwith and direct the Election Commission, Pakistan, to forthwith publish the certificate of PTI on website of ECP as required with section 2093 in the interest of justice, and to restore its election symbol forthwith. Declare that election symbol has been illegally and unlawfully been withdrawn, which is inter alia violation of fundamental rights of the petitioners. अब जो पेशावर वाली पिटिशन है वो दिखाइए. सर उसका पेज नंबर 49 है. Part 1 में है सर. And if your lordship see, your lordship will find that they are virtually the same. इसमें ऑर्डर का जिक्र नहीं है 22/12 का. ये 22/12 का ऑर्डर कौन सा है? The impugned order is of 22/12, my lord. इसमें तो नहीं है कहीं 22/12. सर प्रेयर के अंदर नहीं लिखा हुआ, but otherwise the petition impugns the order. कहाँ लिखा हुआ है? My lord, your lordship will see the impugned order in the index at page 30. And नहीं, पेशावर में जो पिटिशन है अभी प्रेयर क्लॉज में 22/12 का जिक्र कहाँ है? Declare the impugned order. Prayer mentions the impugned order. Which if your lordship will see the impugned order, that's at page 21. नहीं, मैं इनको कह रहा हूँ कि पिटिशनर ने डिस्क्राइब क्या किया है impugned order. ये impugned order सर पेज 33 पे grievance and impugned order. If your lordship will see, ये लिखा हुआ है इसके अंदर. Aggrieved by order dated 22/12/2023 passed by respondent number 1 as the impugned order. पैराग्राफ 1 में जिक्र है. It's the same. अच्छा, इनका कहना कि क्या है, ये हमने फाइल नहीं की है लाहौर वाली? Sir, right now that's what your lordships have heard. No, I don't know. I would ask that question. In Lahore, has the Lahore High Court passed an order? In Lahore High Court, an order was passed, and I have placed that order before your lordship. That is at page 631. अच्छा, ये क्या है? This is an order of the learned single judge. ये क्या किया सिंगल जज ने? Single judge, sir, held that you have also gone in respect of the same order to Peshawar, so I will not hear the matter. But the determination by the single judge is at page 634. ये डिस्क्लोज किया था कि WP 81171 और WP 332 पेंडिंग है. सर 8771 तो लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग थी ना सर. ये भी तो लाहौर हाई कोर्ट का जजमेंट जी, ये लाहौर हाई कोर्ट में है. इसमें इन्होंने जिक्र, ये इनको पता था जी, पेशावर इसका जिक्र है डिटर्मिनेशन में. किस जगह? The learned single judge says that
if your lordship may see, नहीं तो उन्होंने कहा हम नहीं फैसला करेंगे. they said that we will not deal with it. If your lordship see page 637, ये तो ऑर्डर स्पीकिंग, ये तो फिर तो ठीक है, ये ऑर्डर विल नॉट कम इन द वे. this is the second order, but there is an observation by the learned single judge in respect of point number 2 on page 639. उन्होंने कहा कि वो ऑलरेडी पेंडिंग है पेशावर में. That, and my lord, they say 639 point number 2. The learned single judge makes the observation, learned law officers also objected to maintainability of the petition by submitting that fundamental right of freedom of association is subject to reasonable restrictions imposed by law, which in the instant case is the Act and the rules framed thereunder, more specifically sections 208 and 215 of the Act, and therefore without challenging the vires thereof and declaration of the same being ultra vires Article 17, the relief cannot be granted. The learned counsels for the petitioners, when confronted whether the petitioners have challenged the vires of section 215(5) of the Act, read with Article 17 of the Constitution, replied that the same has been challenged before the Peshawar High Court. If your lordship may see 5th line from the foot of the page, in view of the aforesaid, the relief claimed by the petitioners cannot be granted without declaring the said provision of the Act ultra vires Article 17 of the Constitution. I can't find Sir, last five lines. On page 639. 639. अच्छा, okay. In view of the aforesaid, the relief claimed by the petitioners cannot be granted without declaring the said provision of the Act, ultra vires Article 17 of the ये Constitution. उन्हें चैलेंज किया ये ऑर्डर. ये ऑर्डर में ये डीबी में गए सर. उसका नंबर क्या है ICA का? They went in division. एक दिन इस ऑर्डर की डेट क्या है? We got that order yesterday. ये इस ऑर्डर की तारीख क्या है? Sir, this order is 11th January. 11 जनवरी. In intra-court appeal number 2282. नहीं, अब इंट्रा कोर्ट अपील का नंबर बताइए. जी, इंट्रा-कोर्ट अपील का नंबर है लर्नेड सिंगल जज का क्या ऑर्डर है? 2282. लर्नेड सिंगल जज के ऑर्डर की तारीख बताइए. The order of the learned single judge is dated 3rd of January 2024. 3rd of January 2024. At page 631, your lordship will see the date. अब ये गए इंट्रा कोर्ट अपील में. जी, ये they go in intra-court appeal. ICA में नंबर ICA का 2282 of 2024. जी. That इसमें क्या होल्ड किया? Sir, in that आपने कॉपी दी खान साहब को? ये विड्रॉ कर ली इन अपील. जी sir, they withdrew it, and paragraph 3 is the relevant paragraph on page 2. In this view of the matter, the learned counsel for the appellant, when confronted with the prayer qua the illegality or irregularity in the judgment passed by the learned single judge in chambers with respect to section 2155 of the Act, a bid regarding allocation of election symbols, he has nothing in his pocket to rebut the same and opts to withdraw this intra-court appeal, which is hereby dismissed as withdrawn. Consequently, the observations rendered by the learned single judge in chambers are hereby upheld. Do they own these proceedings or they don't own these proceedings? My lord, Or you don't know? this is for the respondents before your lordship to say, but the two petitions in Peshawar and Lahore were verbatim. ये पूछ लेते हैं खान साहब. जी सर, पूछ लें. खान साहब, do you own this petition or you don't? 287 and ICA 2282. We don't. नहीं, who are these people? क्या नाम का? बिलाल नासिर चीमा and ये कौन लोग हैं? बिलाल नासिर चीमा कौन These are है? not on behalf of the party. Candidates have filed. नहीं, who's Bilal Nasir Chima? Associated with you, there are two. One is Bilal Nasir Chima and the other is Chaudhry Umar Aftab Dhillu. I hope I've pronounced it correctly. Do you own these petitions or you don't own these petitions? No, we don't. And who are these two gentlemen? Do you know them? We have not. Who are these two gentlemen? PTI के सर. There may be members of the party. I don't know. I think They are नहीं, not इसमें लिखा है officers of the ex. party. नहीं, इसमें लिखा हुआ है ना, President PTI शेखुपुरा, ex Secretary General and candidate PTI. कैंडिडेट नहीं देखिए, दो बातें होती है ना. एक तो कैंडिडेट अपने
अपने तौर पे जरूर कर सकता है। मुझे वो क्या उसको कहते हैं, मेरा नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हो गया है, ठीक है, वो तो बात उसकी सही है, मगर इसमें जो उन्होंने प्रेयर मांग ली है वो तो पार्टी के बुनियाद पे मांगी है। तो आपने कोई स्टेटमेंट उधर दिया कि ये इसको काटें, ये प्रेयर इसको इधर से, ये प्रेयर हम ये देखिए पीटीआई का जिक्र कर रहे हैं। He had no authority on behalf of the party वो तो to आपका file इंटरनल मैटर है ना, अब हमें क्या पता आपके पास अथॉरिटी है, गौर साहब के पास अथॉरिटी है, ये तो हम नहीं कर सकते ना तय्युन। मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि ये हमारी तरफ से यानी पार्टी की ऑथराइजेशन से नहीं हुई, ये इंडिविजुअल्स ने की है। मगर खान साहब जैसे आपसे लिखा हुआ है, ये उमर आफ्ताब, सॉरी सर, उमर आफ्ताब है प्रेसिडेंट पीटीआई शेखुपुरा, प्रेसिडेंट पीटीआई शेखुपुरा, और ये जो बिलाल नासिर चीमा साहब हैं एक्स सेक्रेटरी जनरल एंड कैंडिडेट पीटीआई गुजरात। नहीं, मैं आप हमारी बात सिर्फ समझ लें, नोट कर लें। जी जी बताएं। एक चीज है ना, पता नहीं हो सकता है हजारों पिटिशन फाइल हो, आपको कुछ पता ही नहीं है, मगर जब ये चीज अगर उस पे आ जाए रेडार पे तो इसका जवाब वो उसका आप जवाब हमें दे दीजिएगा। अगर जहां तक उनकी जाती मसले हैं, उनको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जा रहा है, कोई और इशू है, बिल्कुल करें, वो तो हर कैंडिडेट अपनी भरेगा, आप पार्टी से तो ताल्लुक नहीं है उस लिहाज से, मगर अगर वो पार्टी को जो प्रेयर उसने मांग ली ना, वो पार्टी की मांग ली प्रेयर उसने, और उस पर जज साहब ने फाइंडिंग भी दे दी, तो अब वो जजमेंट को हम इवेपोरेट तो नहीं करेगा ना हवा में। इलेक्शन एक्ट की चैलेंज नहीं कर सकते, आप ये बात कर नहीं सकते, हो सकता है गलत है, हो सकता है सही है, मगर एक जज की फाइंडिंग आ गई, वो फाइंडिंग 2 जजेस ने कंफर्म कर दी, तो अब तसादुम तो हो गया ना, पेशावर हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में, अब जजमेंट्स गायब तो नहीं होंगे। वो लाहौर हाई कोर्ट का, लाहौर हाई कोर्ट वाला जजमेंट आपने हमारे सामने चैलेंज किया है सर? हम पार्टी नहीं थे, हमने चैलेंज कर सकते ये जो कहते हैं ये कोई अपनी तरफ से गया ना, चैलेंज करना चाहिए दोनों को पार्टी बता रहे हैं सर, उसमें हम पार्टी नहीं है, पार्टी द पॉलिटिकल पार्टी इज नॉट देयर। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ना, मगर जज साहब ने सही या गलत एक फैसला तो कर दिया है ना, वो आपको डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है। तो HM साया केस में अगर आप पार्टी ना भी हो तो आपको हक तो मिलता है ना, तो अब आपको पता चल गया है एक जजमेंट आपके खिलाफ आ गया है, और किसने फाइल किया है, कोई आपके दुश्मनों ने नहीं किया, आपके अपने लोगों ने फाइल किया है, वो तो एक अलग बात हो, किसी ने शरारत खेली आपके साथ और चलो भाई ये कर दें, वो आप ही के लोग हैं, आप उनको आपने नजरअंदाज भी नहीं किया कि हमने इनको पार्टी से खारिज कर दिया, क्या है, आपके कैंडिडेट भी हैं पीटीआई के, तो उनको हम ऐसे तो हम, और अब हाई कोर्ट के जजमेंट्स को हम क्या करेंगे, कोई चैलेंज करेगा ना, नहीं तो अब जो भी फैसला है उसको जब तक कोई चैलेंज तो करे ना, फिर हम आगे पीछे उसको कर सकते हैं। अगर आप उसको चैलेंज ही ना करें, उसको छोड़ दें कि जी हम तो उसमें पार्टी नहीं थे, जजमेंट फिर भी रहेगा अपनी जगह पे ना, वो तो फॉर ऑल टाइम्स जो कम रह जाएगा अपनी जगह पे। अब वो आपको भी शायद अफेक्ट करे, दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज को भी अफेक्ट करे, कल को कोई और पॉलिटिकल पार्टीज आ सकती है कि भाई ये जजमेंट गलत है, तो वो तो कह सकते हैं कि हम तो इस पार्टी में नहीं थे, हमें सुना नहीं, मगर आपका तो पे नहीं कह, आपके कहना जरा मुश्किल हो जाएगा मेरे हिसाब से। बहरहाल आप नोट कर लीजिए बात, चलें आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, ये पेशावर हाई कोर्ट का भी आईसी में ऑर्डर हुआ है, WP में हुआ है? WP, my lord. आईसी है ही नहीं है पेशावर में, आईसी नहीं। Two judges here, the petition like in Sindh, my lord. As a general rule, now this I'm asking a question. Court's order of a high court by a learned single judge in writ petition, and another province's court order in a ICA, which takes priority? My lord. Have you understood the question? Yes, my lord. Yes, my lord. Over there, at least at the ICA, a determination has... Forget this case. I'm asking a question of law. My lord, it's a DB order in both cases. Yes. So they stand more or less on the same plane. Yes. Generally. You won't add the one judge to the 2 judges and say there are 3 judges now. No, my lord, because the order is that of a division bench in both it's cases. Interesting question. Yes. Okay. Have you ever considered something like this before? Not this honorable court, no, my lord. This has arisen, the issue has arisen. No, ये इसको छोड़ें, general question of law पे पूछ रहे हैं. General question. One DB decides a matter
and one ICA. ICA is an appellate forum. Decides a matter. Both stand on equal footing if there are two judges naturally in both. So that was the question. Yes, my lord. Because I've never considered this question before. My lord, I haven't come across a judgment where the issue has been considered. Continue. My lord, I was taking your lordship through page 140, which your lordship had taken a look at, and the election of office bearers, your lordship had taken a look at 141, 142. Then we, my lord, proceeded to page 192, where your lordship was dealing with the Federal Election Commission. And Election Commission shall be comprised following: Federal Election Commission. तो हमने पढ़ लिए 4 सूबों के और 2 दूसरी टेरिटरीज के, and sections की violations हो रही है. जी, and these are the ones which the Election Commission says. What is the position of the Election Commission? They say that there was a duly elected commission. That was, at that time, the Federal Election Commissioner was Mr. Jamal Akbar Ansari. Now, thereafter, we have been told that this is the current gentleman is the chairman, who is also the respondent number 2, is the Chief Election Commissioner of the party. Insofar as we are concerned, we have not been informed of how he has come about. I showed to your lordship that he has been appointed as a result of an order passed, which is on your lordship's files, which your lordship just saw, by Mr. Umar Ayub. The Election Commission says this is not the correct procedure for appointing someone, because that is dealt with. Has Jamal Ansari left the party? My lord, the Election Commission says in the order which was impugned before the Peshawar High Court and which is before your lordship, that the Election Commission was not informed how this change has taken place. As a matter of fact, do you know or no? As a matter of fact, we don't, my lord. My instructions are that we don't know. I'm thinking of another thing. PTI's position, earlier position, was that the elections that we held in June of 2022 were in accordance with our constitution. Some people got elected, I don't know, I presume, and those people, now they're saying, election commission says, no, this is not proper election. They say, okay, we go and hold another election. What happens to those people? Were they heard? Because वो भी तो उनकी भी तो vested right हो जाएगी ना, unless they are the same group of people, the same identical people who again got elected. Because if they are maintaining that are they conceding that the elections of June was not in accordance with law, or are they sticking with the story, or saying, okay, fine, we set aside these elections? Has the political party set aside its own elections and said we'll hold it again? Otherwise, वो लोग कल को वो petition file कर देंगे, जी मैं तो elected हूँ, ये कैसे आ गए हमारी जगह? मतलब इस पे कोई बात हुई या नहीं हुई? Before the Election Commission, they took the position that since you have pointed out all these defects, in order to cut the controversy short, we will recall those elections and hold elections afresh. That's how the second election came about. वो वाले भी unopposed थे? Those were, yes, my lord, and copy. They were, the instructions are they were unopposed. तो आपका इनसे बहुत पुराना झगड़ा चल रहा है इलेक्शन पे. Sir, this was going on since the time when this particular party was the party in administration. The first reminder issued to them to hold elections, because the period has expired, was issued on 24th May 2021. 24th May? May 2021. फिर आपने कहा कि चलो आपको एक extension time दे देता हूँ. Sir, that we are being benevolent. They sought an extension on the ground that due to COVID. क्या की हुकूमत कब तक थी? Sir, their government continued till 10th of April 2022. अच्छा, तो ये उस जमाने में ये हुकूमत में थे? Yes, sir. तो वे इलेक्शन क्यों नहीं कराए? Sir, they said we were unable to hold the elections on account of the pandemic, COVID-19,
And therefore, the Election Commission gave them a 1-year extension to hold the elections. Your Lordship will see. जब वो हुकूमत में थे तो आपने उनको रिलीफ दे दी. My Lord, we gave them a show cause notice while they were in. Show cause notice के बाद में कहा चलो भाई एक साल बात कर लो. Yes, my Lord. But while they were still in government, on 24th of August 2021, we wrote to them and said that you were granted a 1-year extension and now the due date is coming and hold elections. Then we sent them a reminder on 7th. जरा बताइए ये जो आप रेफर कर रहे हैं कहाँ है? My Lord, yes. The first letter your Lordship will see is 24th of May 2021, which is at page 391 of your Lordship's paper. Just for disclosure, My Lord. Mr. Makhdoom Ali Khan, My Lord. we reached out to the Lahore High Court to find out the status of WP 332 of 23 and the other matter, and both are pending adjudication before a 5-member bench. Yes, my Lord. This is just now, got it. The order that your Lordship last saw, they were adjourned to 12th of January, which is नहीं ये today. तो आज स्टेटस हमने कहा हो सकता है कभी डिसमिस हो गया हो कुछ हो गया हो ना नॉन प्रोसिक्यूशन या कुछ तो आज तो this, नाउ प्लीज टेक अस टू द लेटर ऑफ 24th of May. my Lord, that is at page 391. I am directed to refer to the correspondence resting on the subject. Attention. एक सेकेंड 3 My Lord, page 391. आप जरा पार्ट भी बता दिया करें. Sir, I'm sorry, part 2. हाँ 391 में 391 Page, part 2. जी. I am directed to refer to the correspondence resting on the subject. Attention is drawn towards sections 208, 209 and 215 of the Elections Act 2017, read with Rule 158 of the Election Rules 2017, thereof whereby a political party is to conduct intra-party elections in accordance with its constitution, a mandatory requirement under the law to sustain, retain the already allotted election symbols, and to contravene with prescribed legal provisions, a political party shall be issued show cause notice by the Election Commission, and election symbol whereof shall be withdrawn, enabling the party ineligible to obtain an election symbol for the elections to come. Foregoing in view, it is advised that intra-party elections of your political party may be conducted timely in a manner provided in party's constitution to avoid being declared ineligible as given in law. If your Lordship graciously turns but इसमें तो इससे भी पहले चल रहा था. Says I'm direct to refer to the correspondence resting on the subject. Yes. So there was some earlier correspondence. And till when was this political party in government? So this party was in government till 10th of April 2022. 10th of April. So this letter was written while they were in government. Yes, my Lord. And this, so the allegation that you were somehow under pressure, are you making that point here? My Lord, no, we are pointing out just to your Lordship the history. In the behest of the caretaker government, you're doing this? No. My Lord, all that the ECP is saying before your Lordship is that this is a matter, this is a background to how the first... जवाब किधर दिया उन्होंने? My Lord, we didn't get satisfaction to this, so we issued a show cause notice, which is at page 392. जवाब तो दिया हुआ है ना उन्होंने. My Lord, yes, they gave. They wrote that 2019 में था ना? जी सर. If your Lordship नहीं ये 2021 का सर लेटर है. नहीं मतलब COVID-19 कहते हैं ना 2019 का है ना? जी. चले 19-20 निकल गया तो 21 में आप मांग रहे हैं election. And then they give a reply. वो किधर है? My Lord, that is at page 393. 393. ये जरा पढ़ लें. जी सर. इसका relevant portion पढ़ लें जो भी पूरा पढ़ना चाहें. That with regard to the paragraph 2, that with regard to the concern raised by ECP in the instant show cause regarding failure of PTI, provision of certificate pertaining to conduct of intra-party elections due on 13th June 2021, it is submitted without prejudice that due to COVID-19. तो ये मान रहे हैं कि due हैं. जी सर.
and they were due as of 13 June, according to them. That due to COVID-19, all activities where public gather are restricted. It is due to this reason that holding of various events of the party, including intra-party elections, were affected, and many activities could not be carried out as per schedule. If your Lordship may graciously turn the page, last paragraph. In light of above, you are therefore requested to withdraw show cause notice and a time period of 1 year, subject to permission to hold large public gatherings by NCOC, and government may be granted to PTI for holding of intra-party election in the interest of justice, please. Then, my lord, ये 1 year कब होगा एक खत्म? sir, we give them time, and there's the next letter on 24th August 2021. Next letter, my lord, at page 395. Paragraph 2. As per record, the last intra-party elections of Pakistan Tehreek-e-Insaf were conducted on 13 June, and the tenure was fixed 4 years as per Party Constitution 2018. 4 years था या 3 years था? Sir, according to the current constitution, it is 3 years. They are mentioning 4 years as per the constitution of 2018. This is the 2019 constitution which your lordship have before you. Later on, amended constitution submitted in the year 2019, and according to its sunset clause 4.1, the party has to conduct the intra-party election within 18 months of the adoption of the constitution of the party, and as such the target date was 1st November 2020. However, the Honorable Election Commission has accepted your request and advised to conduct intra-party elections of the chairman and other office bearers well before 13 June 2022. And then, you are overtly generous. we give them a 1 year. You were overtly generous because they were in government. My lord, I mean, they are themselves accepting that 1st November 2020 is the target date, and you said, "Chalo, 2 saal le lo." sir, because of the COVID-19 restrictions, because they had pleaded in the previous letter, asked for 1 year, that is why the election commission gave. There is no other explanation. पार्टी से आप भी generous थे आप या नहीं? Sir, 2-4 पार्टी और भी थी जिन्होंने कोविड की वजह से एक्सटेंशन मांगी थी, and they were granted the extension. that's correct, your अच्छा, तो अब आपने दी 13 जून को. जी सर, फिर इन्होंने इलेक्शन कब किए फिर? Sir, the elections was then held on 13th June. इन्होंने 10 जून को किए. जो आपने कहा कि सही नहीं है. जी सर. अच्छा. And that was also held after we gave them a reminder letter. वो आपने क्यों कहा था कि सही नहीं है 10 जून वाले इलेक्शन? बुनियादी बातें. They were because the elections were to be held in accordance with the constitution. नहीं, बुनियादी बातें बताइए. There were certain violations of the constitutional provisions of the PTI. आपको पता है points या नहीं पता है? My lord, this was the ground urged over there, that several provisions of the PTI constitution were violated, that several of the persons were not appointed correctly, and that is why that order was issued. That impugned order is before your lordship. It is at page. नहीं, देखिए मखदूम साहब, एक सवाल उठता है जो हमारे जहन में भी है. हम जो जहन में होता है मैं कह देता हूँ, कभी कभी लोग पसंद नहीं करते हैं. हम ये देखना चाह रहे थे कि आपका इनके साथ रवैया जो है अब वो क्या सख्त हो गया है. सख्त कोई और लफ्ज नहीं इस्तेमाल करेंगे, सख्त हो गया है, क्योंकि शायद कोई वजह से, या फिर आपका यही रवैया रहा है इनके साथ हमेशा से. तो ये खतूत से तो एक चीज तो जाहिर होती है कि आप इनसे कह रहे हैं इलेक्शन कराओ, और आपने और ये मैंने मान भी लिया कि हाँ बात तो सही है आपकी, हमने इलेक्शन नहीं कराए. इन्हें वजह दी कि हमें 1 साल दे दो. आपने कहा चलो ले लो साल. आपने नहीं कहा कि 3 महीने ले लो, 6 महीने ले लो. भाई आपको क्या पता था कि कोविड 1 साल और चलेगा या नहीं चलेगा. बहरहाल आपने बहुत जेनरोसिटी का जाहिर की, तो 1 साल आपने इनको दे दिया. फिर उन्होंने इलेक्शन किया, आप कह रहे हैं फिर वो भी इलेक्शन सही नहीं हुआ. ठीक है, तो
ठीक है, बस ये हम देखना चाह रहे थे कि ये आपका एटीट्यूड कैसा है, कि अभी बदला है या पुराना है, क्योंकि उस वक्त एक अहम बात जो सामने आई है वो ये, उस वक्त ये सरकारी पार्टी थे, My lord. अब शायद नहीं है सरकारी पार्टी, My lord. तो उस वक्त आप इनको अकोमोडेट कर दिया, बहुत ज्यादा कर दिया 1 साल का, मगर फिर भी अकोमोडेट किया, मगर आपने इशू रेज किया हुआ है इलेक्शन का जब से इनकी सरकार थी। My lord, yes. And the other thing, my lord, that at the very time, in the first letter which I read out before your lordship of 24th of May 2021, at page 391 part 2, we had said that the consequence of not holding this election, ये बात भी आप कर चुके हैं। इनको उस वक्त जब ये पार्टी इन पावर थे, इनको कहा कि आपका सिंबल वापस ले लिया जाएगा अगर आप इससे कंप्लाई नहीं करते। दिस इज द कॉन्सिक्वेंस। उन्होंने इस बात की मुखालिफत नहीं की, आपके पास ये हक है ही नहीं, दैट जुरिसडिक्शन दे डिड नॉट कॉन्टेस्ट। उन्होंने कहा ठीक है आपकी बात सही, इलेक्शन नहीं किया, 1 साल दे दीजिए, हम कर देंगे। जी ठीक, समझ गए, आगे बढ़िए। कोई और पॉइंट? The next point is that when the elections were held first time round, we passed an order. They challenged that order, as your lordship saw. तो हो गया सारा। जी, वो सारी बात हो गई। Don't repeat yourself. Yes, they passed that order. Then they appeared before the election commission. They resigned from that position and they said we'll hold another election. Now and that time, then they have thereafter proceeded to hold the second election. As a result of the second election, the election commission has raised certain objections and passed the order. What is the crux of that order? The second order which was impugned before the Peshawar High Court. एक आपने बात की कि आपने जो अपने आईन में जो लिखा हुआ है, जो 7 मेंबरान का बोर्ड वो आपने बनाया इन इलेक्शन करने My lord, yes. दूसरी बात आपने कहा है कि एक अजीब बात है कि पूरे पाकिस्तान में सभी अनअपोज्ड आ गए। तीसरी बात आपने कहा कि आपने ये तो बताया नहीं अपने मेंबरान को इलेक्शन हो कहाँ रहा है, नॉमिनेशन पेपर कहाँ है, कितने नॉमिनेशन फाइल हुए, मतलब कितने लोग मौजूद थे, तो ये आपकी बातें, इसके अलावा जो बातें वो बताइए। जी सर, हमने इनको ये कहा कि आपके रिपीट ना करें। No, my lord. We said that according to your constitution, you could co-opt if there was a vacancy in the membership of the commission. But if the chairman ceases to be, the chairman has to be elected in terms of your own constitution, and the present chairman of the Federal Election Commission of the PTI is not an elected person. He has been appointed by Mr. Umar Ayyub. You claim कहाँ लिखा है आइन में, इनके कहाँ लिखा है? in the impugned or in the order. ऑर्डर में नहीं, इनके आइन में पहले दिखाए ना, आइन, फिर इम्प्यूग्ड ऑर्डर पे जाइए, या आपके कानून की बात कर रहे हैं, इलेक्शन एक्ट की? No, my lord, I am showing your lordship from their constitution, which is at page 124, and if your lordship graciously proceeds to page Federal Election Commission, secondly, you again taken my paper. My lord, at file 1, page 192. That one. ये मेरी नौकरी, आपको क्या चाहिए? Sir, your lordship will see functions. And the election commission marked the provision. Article 9, नहीं, किस आर्टिकल? page 192. इसको दिखाना मुझे page 192. 9 तो इधर है ही नहीं। अच्छा, रोमन 9. जी, फेडरल, ये तो हम पढ़ चुके हैं। My lord, the Secretary General shall propose with the approval of the chairman. Yes, my lord. The Secretary General shall propose with the approval of the chairman the names for all the 6 commissioner and chief of the Federal Election Commission from outside the membership of the National Council, and that's the method of how they are elected. Paragraph 5. The commission can co-opt associated members for specific jobs departments and may co-opt members for any vacancy arising out of resignation or incapacitation of a member. 6. In case of the resignation or incapacitation of the Chief Federal Election Commission, full above mentioned procedure need to be adopted, which is the procedure of election given in paragraphs 2 and 3 above.
So while a co-option, तो आपका कहना है कि उमर अयूब साहब के पास कोई इख्तियार नहीं था, that's the submission, my lord. क्या करना चाहिए था उनको? My lord, if the chief election commissioner has resigned, the election had to take place in terms of paragraphs 2 नहीं, उस and खत में 3. क्या लिखा है? उन्हें रिजाइन किया है या उनको रिमूव किया है? That it says that Mr. Gohar Khan has resigned and therefore you are being appointed. Page 89. Page 89, part 1. Following the resignation of Barrister Gohar Khan on 27th November 2023, it is notified that Mr. Niazullah Khan Niazi is hereby appointed as CEC, Pakistan Tehreek-e-Insaf, with immediate effect. अगर आप ये भी कह रहे हैं कि ये सेक्रेटरी जनरल कैसे अपॉइंट हुआ उनका? Sir. And that is the other point which we make in that order by the Election Commission, that the Secretary General himself could not have been appointed in this manner, and in any event on our record Mr. Asad Umar still continues on As our the Secretary General. as the Secretary General. On our record Mr. Umar Ayub was never brought on election commission का एक तो इलेक्शन कमीशन को इन्फॉर्म करना जरूरी है कि सेक्रेटरी जनरल चेंज हो गया. My lord, because the list of party bearers is filed with us and we need to know who is किस there. लॉ के तहत? My lord, किस लॉ के तहत? My lord, लॉ की बात under the Election Act, they have. हाँ, इलेक्शन एक्ट के जरा रेलेवेंट प्रोविजंस बताएं हमें, क्योंकि we've seen their constitution, we want to see now the law. Yes, my lord. If your lordship may see, the first provision in this respect is 200. Your lordship will see chapter 11, political parties. And then this is how 201, how the political party is constituted. A political party shall formulate. वो ना पढ़े रेलेवेंट बात बताएं. जी सर. सर B में आप देखें organizational structure of the party at the federal, provincial and local levels, whichever is कौन सा सेक्शन में पढ़ रहे हैं आप? 200 My lord, 201. सेक्शन 200. 200 या 201? 201 sir. 200 is just who will be a political party. 201 is shall constitute, formulate, so it's the requirement of the law. A political party shall formulate its constitution by whatever name called, which shall include the aims and objectives of the political party. B, organizational structure of the political party at the federal, provincial and local levels. Then membership fees, designation and tenure of the office bearers of the political party. Criteria for receipt and collection of funds for the political party. And F, my lord, procedure for 1, election of office bearers. 2, power and function of office bearers, including financial. वो subsection 3 है मेरे ख्याल में. My lord, any change in the constitution of a political party shall be communicated to the commission within 15 days of incorporation of the change, and the commission shall maintain updated records of the constitutions of all the political parties. Constitution, That's a are we here referring to the constitution of the body or Yes. constitution document? My lord, in my submission, this sounds like the constitution of the body, constitution of a political party. Yes. तो ये है 2013. Yes. तो हमारा सवाल था क्या, क्यों बताएं आपको? तो 201 ये लाजिम करता है उनको कि बताएं आपको. Yes, ma'am. 3. And then 202, how the political parties are enlisted. And then if your lordship may proceed. तो ये आपसे राब्ता पॉलिटिकल पार्टीज का मुतवातिर होना चाहिए. Sir, ये जो आप कह रहे हैं ये सिर्फ आप इनके लिए तो नहीं कर रहे हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज के कर रहे that's true for every political party. हैं. नहीं, आपने ये तो नहीं किया इम्तियाजी सलूक इनके साथ. No, sir, no, not at all. We have required this of every political party. Then your lordship will see section 206. This is the selection for elective offices. Then 207, functioning of a political party. And that requires them to convene a general meeting every year. It requires that they shall have an elected general council at the federal, provincial and local levels. Then your lordship will see 208, the office bearers of a political party at the federal, provincial and local levels, wherever applicable, shall be elected periodically in accordance with the constitution of the political party, provided that a period not exceeding 5 years shall intervene between any two elections.
any member of a political, then who can participate, my lord? Any member of a political party, subject to the provisions of the constitution of the political party, be provided with an equal opportunity of contesting election for any political मेंबरशिप party की office. डिटेल्स भी आपको देना होती है या नहीं? Sir, office bearers की details देते हैं ये. मेंबरशिप की जरूरत नहीं है. Initially देते हैं. Right, when the party is enlisted, at the time of its enlistment, they provide, because the requirement is that they should be at least have 2,000 members before it can be enlisted as a political party by the election commission. और 209 क्या कहता है? 200 सर, अगर 208 एक बार और देख लें सर. A member of a political party shall, subject to the provisions of the constitution of the political party, be provided with an equal opportunity of contesting elections for any party office. Subsection 3. आपका बुनियादी तौर पे ये केस है 208(2) का कि आपने अपने मेंबरान को ये मौका नहीं दिया कि वो इलेक्शन लड़ सके. And in respect of Mr. Umar Ayyub, your lordship may see also subsection 4, the political party shall publish the updated list of its central office bearers and executive committee members by whatever name called on its website and send the list and any subsequent change in it to the commission. ये वो तो चले एक टेक्निकल चीज है ना. दो बातें हो गई ना. एक होती है बुनियादी हकूक. जी सर. बुनियादी हकूक आइन में भी दर्ज है, आर्टिकल 17 में भी, इलेक्शन का हक. अब एक टेक्निकल चीज है कि उन्होंने नाम भेजा नहीं भेजा, चलें भाई उसको तो आप नजरअंदाज करना चाहें या ना करना चाहें मुझे नहीं पता, मगर एक बुनियादी हक है हर शहरी का कि वो अपनी मर्जी की पॉलिटिकल पार्टी को वोट करे, और ये बुनियादी हक हर पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर का भी है कि वो वोट का हक इस्तेमाल कर पाए और लड़ सके इलेक्शन किसी ऑफिस के लिए. नहीं तो फिर अगर हम ये हक छीन लें तो फिर तो डिक्टेटरशिप नेशनल लेवल पे भी हो जाएगी और निजी लेवल पे भी हो जाएगी. जी मेरी मर्जी मैं जो करूं. And that is why, my lord, in section 209, the requirement. ये सब पॉलिटिकल पार्टी से आप बराबर का शुरू कर रहे हैं ना? Yes, my lord. There is. In my instructions are that. मगर इतना माइन्यूटली और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका भी आप रिकॉर्ड इसी तरह देख रहे हैं इतना माइन्यूटली. Yes, my lord. सर ये अभी वहाँ भी अनअपोज आते हैं या वहाँ आपने My lord, and we have delisted today. अनअपोज जो आ ये रहे अभी हमने एक डीलिस्टेड का केस अभी जी देखा सर. था. हम अभी मगर एक बात जो up to today में शायद जाती है कि आपने ये इशू उठाया था जब पीटीआई खुद हुकूमत में थी. My lord. तो ये एक मेरे ख्याल में एक वजनी बात है. My lord. ये नहीं कि एकदम से हुकूमत से गए तो आप इनके पीछे पड़ गए. मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. मेरे आई डोंट नो मे बी. My lord, that is our respectful submission and reply to the query of my lord Mr. Justice Muhammad Ali Mazhar for various violations. Even today, 13 political parties have been delisted. and one and earlier part of the day. चलें खैर उसकी बात ना करें, कल को हमारे सामने होंगे. जी सर, तो जी वो मगर ये बस हम देखना चाहते हैं कि भाई आपका ये कोई पिक एंड चूज वाला एटीट्यूड ना हो. जी सर. अच्छा तो असली बात इलेक्शन की आ गई ना बस. जी सर. एंड देन ये माइनर चीजें तो चलें ठीक है. वो अनअपोज आने की जो रवायत है ये सिर्फ इन्हीं के पास आई है या और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज में भी अनअपोज इलेक्शंस हैं? दूसरी और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज जो My lord, I will take instructions and specific. पीछे इलेक्शन वाले इलेक्शन कमीशन ये अनअपोज जो है और पार्टीज में भी आते हैं या सिर्फ यहीं पे ये रिवायत कायम हो गई है और आपकी दूसरी पार्टीज में इलेक्शन होते हैं प्रॉपर या वो भी इसी तरह होता है? रिकॉर्ड देख के फिर बता सकते. जरा चेक कर लीजिएगा कल. चले आप देख लें. The submission is, my lord, that the objection. Let's finish with the law now. Yes, my lord. Section 209. A political party shall, within 7 days from completion of the inter-party elections, submit a certificate signed by an office bearer authorized by the party head to the commission to the effect that the elections were held, and it's very important, my lord, in accordance with the constitution of the political party. And this act to elect the office bearers at the federal, provincial and local levels wherever applicable in accordance with the constitution of the political party. And if your lordship may then straight away proceed to section 215. 215. My lord. Eligibility. Yes, my lord. Anything notwithstanding. ये आपको भेजा उन्होंने सर्टिफिकेशन? My lord, they did. वो किधर है, किस सफ़े पे है? And that is on the basis of that we proceeded to issue them a notice, and thereafter these proceedings took place.
ये 440 या 441 पे होगा। My lord, if your lordship may be 89 या 90 पे है graciously, ये। 440 this is, my lord, Page 90. page 440, letter to the ECP from PTI stating that the intra-party elections took place on 2nd of December 2023. एक सेकंड। This is in part 2. एक सेकंड। नहीं, ये जो इनका फॉर्म है ना, ये फॉर्म दोबारा 65, बताइए। My lord, this is सर्टिफिकेशन। फॉर्म 65 page जो है, 440, part 2. फॉर्म 65 पेज 66 पे है। जी सर। तो पार्ट 1 देख लेना, वो जो चीफ साहब पूछे पेज 66 है पार्ट 1, पेज 66। ये सर्टिफिकेशन। हाँ, ये फॉर्म 65 डालना है ना, ये फॉर्म ये 65 किधर है? फॉर्म 65 ये यही है? नहीं, यही फॉर्म। जी जी जी, ये फॉर्म वाली बुक है हमारे पास रूल्स में। जी सर, ये रूल्स के अंदर प्रेस्क्राइब फॉर्म है, that is रूल्स there in कहाँ the है rules. हाँ, ये वाली है। फॉर्म 65 निकालिए। रूल्स की किताब में है ना फॉर्म। जी सर, this is under rule 158(1). 168 पे फॉर्म 65। जरा ये पढ़ लें। My lord, yes. Form 65, certificate regarding intra-party elections. I such and such office. नहीं, इनका एक्चुअल वाला पढ़े ना, पेज 68 पे। Page 68, 66. This is Barrister Gohar Ali Khan, Chairman of Pakistan Tehreek-e-Insaf, do hereby certify that intra-party elections have been held in accordance with the constitution of the party and the provisions of the Election Act 2017, and furnish the following information and documents annexed hereto in respect of: 1. The date of the last intra-party elections, 13/6/2017, declared invalid. The names, designations, and address of the party leaders and all other office bearers, along with their attested copies of NICs elected at the federal, provincial, and local levels, wherever applicable. The election results, including the total number of votes cast and the number of votes secured by each contestant ये किधर है? for all of party offices. ये किधर है? ये तो सर, because नहीं, इन्होंने लिखा है they have said they are unopposed, so therefore. जी, यही तो ये कैसे कह रहे हैं कि the number of votes cast and the number of votes secured, ये कैसे कह रहे हैं? ये कौन सा इसके साथ मुंसलिक किया है इन्होंने डॉक्टर? Nothing, because all the certificates. क्योंकि देखिए, एक जगह तो वो आपने पढ़ा था कि अनअपोज आए, इधर ये तो कह रहे हैं कि नहीं, वोट्स कास्ट हुए और नंबर ऑफ वोट्स सिक्योर्ड बाय ईच कैंडिडेट। If your lordship takes a look at what they have filed, उधर तो नहीं लिखा है ये कुछ। that is from page 79 onwards. Your lordship, sorry, even before 3 का जवाब किधर है? रोमन 3 का सर, जो इनका अपना डॉक्यूमेंट है, वो पेज 78 पे है, अगर आप देखिए 8। सो अंडर दी, ये तो सारा उन्होंने लिख दिया अनअपोज। वोट्स के नीचे अनअपोज तो लिखा है। बैरिस्टर गौहर अली खान, चेयरमैन PTI, अनअपोज। दिस लिस्ट रोमन 3 है, वो कहता है, और आई थिंक ये फॉर्म 65 भी यही कहता है कि एक्चुअल वोट्स होंगे ना, कि आपको 10 वोट मिले, उसको 100 वोट मिले, जो भी होता है, total number of votes cast and the number of votes secured by each contestant for all of party offices. तो ये पेज 79 पे भी देखिए, जो इस वक्त बात चल रही थी उमर अयूब खान साहब के हवाले से कि वो कब इलेक्ट हुए हैं, वो तो इस वाले में पेज 79 पे लिखा हुआ है, डेजिग्नेशन सेक्रेटरी जनरल अनअपोज। ये तो इलेक्शन के बाद आए ना। जी जी। तो उससे पहले सेक्रेटरी जनरल का जो सवाल था, वो कब अपॉइंट हुए थे? सर, देयर वाज, अकॉर्डिंग टू आवर रिकॉर्ड्स, नहीं, ये देखे ना, इसमें सेंट्रल ऑफिस बेयरर्स की जो लिस्ट है ना, पेज 79 पे। जी सर। उमर अयूब खान, डेजिग्नेशन सेक्रेटरी जनरल, वोट्स अनअपोज। जी सर, दिस इज विद इफेक्ट फ्रॉम 2nd of December. योर लॉर्डशिप इज राइट। उससे पहले साइन कर रहे हैं ना सेक्रेटरी जनरल की। जी सर। मुझे एक और खत दिखाया था आपने, वो दिखाइए जी, कि आई रिजाइन, तो इनको अपॉइंट कर रहा हूँ। ये गौर साहब जी की सर, सिग्नेचर के बाद 86 पे तो नहीं। आपने अभी दिखाया था मैं कहीं, तो उससे ये क्वेश्चन लिंक हो रहा था ना कि आपने कहा उनकी अपॉइंटमेंट का कोई प्रोसीजर बताया नहीं है, या अपॉइंटमेंट का कोई लेटर नहीं है रिकॉर्ड, तो इसलिए ये सवाल आपसे आपने अभी हमें बताया था, वो एक खत था।
I'll just give your lordship the page 89. Sorry, 86 में 89. Page 89. Part 1 again, my lord. ये देखें ना, ये है 28 नवंबर 2023 का. नहीं, ये इन्होंने अपने मतलब ये तो पहले का है जी सर. इलेक्शन से पहले का, तो ये कब बने, कैसे बने, ये नहीं पता आपको? Sir, he was never. Your lordship has seen the law. आपका मौक़िफ़ ये है कि असद उमर ही आज सेक्रेटरी जनरल हैं. जी, चूंकि this election. और अगर वो पार्टी छोड़ गए या नहीं है तो कोई तरीक़ेकार होना चाहिए किसी और को अपॉइंट करने की, जो इलेक्शन होना चाहिए. Yes sir. And according to the law, तो पहले उनका इलेक्शन होगा, फिर वो इलेक्शन, फेडरल इलेक्शन क्या होता है, फेडरल इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करेंगे और 6 और इलेक्शन कमिश्नर बनेंगे जो बॉडी को बनाएगा जिसके तहत इंतखाबात होंगे. Yes, चलेगा ना मामला? Yes, madam. Because what your lordship have from page 78 to 87. ये सवाल तो इनके लिए हम पूछेंगे इनसे. आप कह रहे हैं ये ऐसा कुछ भी नहीं किया इन्होंने. अब हम ये सवाल पूछेंगे कि किया या नहीं किया, वो सुन भी रहे हैं. ठीक है, और आपका कोई अगला पॉइंट? So we show that from 78 to 87 they were all unopposed. Our submission was, and the election commission order which is there with your lordship. और एक और बात जो है जी, आपने कहा ये हमने अज खुद नहीं किया, अज खुद भी आपने किया था और इनके अपने कंप्लेंट्स भी आए. जी सर. इनके अपने फाउंडिंग मेंबर्स वगैरह की. सर, हमें भी तो इलेक्शन लड़ने दो सर, बेशक हार जाएं. अच्छा, मुख्तुम साहब, ये इलेक्शन अगर अनाउंस हो जाए उनका तो हाउ इज दैट पब्लिसाइज्ड? हाउ वुड एवरीबडी कम टू नो के इलेक्शंस हो रहे हैं इनके? व्हाट्सएप फैसिलिटी तो सबको अवेलेबल नहीं है. that is correct. पब्लिक नोटिस हुई है, कोई अखबार में क्या कोई कानून में कोई शिक है या इनके अपने रूल्स में कोई शिक है? The law only provides that they should be held in a fair and transparent manner. में कुछ है? Constitution में I haven't come across a provision which provides a particular method, but the law which exists, the law says they should be in a fair and transparent manner where persons should be given a right to participate, and that's there in 208 which we, and 209, not 209, 208 which we just read out to you, Roger. अच्छा, कोई स्पेसिफिक शिक नहीं है रूल्स में क्या आपको अखबार में नोटिस देना है या क्या करना No, my lord, that's not it. Conducted in accordance with their. कि अपने रूल्स Because they have to conduct it, my lord, in accordance. रूल्स में, आपके इलेक्शन रूल्स में कुछ ऐसी बात है? इलेक्शन रूल्स के अलावा इनके अपने रूल्स भी लगे हुए हैं. जी, वो हाँ, इनके अपने रूल्स हैं, वो देखिए, अभी नजर पड़ी थी मेरी. that कॉन्स्टिट्यूशन के साथ देखे ना इनके. जी जी सर, बिल्कुल लगे हुए हैं. But our submission is that these rules were to be made by the election commission itself for its purposes. It couldn't change the party constitution. They couldn't, under these rules, bring in someone who was not entitled to come in through the party constitution. Rules? Provision कहाँ है? Constitution में. अब्दुल साहब, अगर इन केस इन द मिडल कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाती है जिस तरह इस पार्टी के साथ हुआ, इन द मिडल इनके सेक्रेटरी जनरल चले गए उमर असद साहब, इम्प्रेशन यूँ मिल रहा था एज इफ ही हैज लेफ्ट द पार्टी पोजीशन, नॉट द पार्टी. तो ऐसे के लिए कोई है इनके रूल्स या एक्ट में इनके कुछ ऐसा है कि कोई टेम्पररी अरेंजमेंट हो सकती है? The Constitution, your ladyship, deals under section 512 on page 141 with the election of office bearers, and then कैसे आता है? Party which my lord Mr. Muhammad Ali Mazhar was referring to, they, my lord, are framed by the election commission under article 9 paragraph F.1 at page 192,
हाँ, उसमें देखें इनके रूल्स के अंदर कोई तरीका दिया है पब्लिसाइज करने का? No, Your Lordship, because they develop their bylaws, internal working in accordance with the Constitution and notify the same. Where is the document of rule? मुझे वो बताया ना, वो मिल नहीं रहा, वो इसमें है इसमें. Rules sir, page 99. They begin with 98 and the They're not part of it. ये तो 99 ये है ना इलेक्शन रूल्स इनके 98 के ऊपर हैं. ये आप देखिए. Your Lordship will notice two things immediately. These have been brought forward by them now. They are not a part of their constitution, and the election commission, they were not submitted to the election commission. उसमें कुछ फर्क आ गया है? Sir, yes. Because the statute says the election has to be held in accordance with the constitution, not in the bylaws. Because Your Lordship, इसमें देखेंगे अगर ये इलेक्शन रूल्स 2020 हैं ये तो these are PTI own rules. My Lord. इसमें इन्होंने कहा है कि वेन्यू को हम अनाउंस भी करेंगे और लोगों को बताएंगे भी कि लिबर्टी टू चूज वन वेन्यू फॉर होल्डिंग ऑफ इलेक्शंस और सेपरेट कीपिंग इन व्यू द सिक्योरिटी एंड अदर अरेंजमेंट्स एज माइट बी रेलेवेंट. द वेन्यू मे बी नोटिफाइड सेपरेटली और एज पार्ट ऑफ द इलेक्शन प्रोग्राम. तो ये जो वेन्यू की बात हो रही थी अभी इससे पहले वो उन्होंने इसमें लिखा हुआ है. नॉमिनेशन के लिए रूल 6 में एनी वेरीफाइड वोटर में propose or seconded the name of any candidate as chairman. ये जरा सा illegible है copies. Chairman on form 1. The nomination form may be filed by the candidate by his proposer and seconder before the returning officer. ये है इसके अंदर rules 20 के अंदर. Any verified voter may propose or second the name of any candidate. नहीं तो आप कह रहे हैं कोई नया मंशूर इनका बना है? No, my lord, what happens is that आप कह रहे हैं मैं मानता नहीं हूं मगर कोई नया मंशूर है. No, I'm saying, my lord, the constitution is the constitution of 2019. The law requires that the elections should take place in accordance with the constitution. वो तो हम समझ गए मगर फिर आपने अभी कुछ जिक्र किया कि इनने कोई नया मंशूर इनका मौकिफ है. These rules of 2020 are framed by the election commission for its own internal working. That is there on page 192 of your lordship's file. They specifically say 192. Under the heading functions after number 6. 192? Page 192, part 1, my lord. वो तो फेडरल इलेक्शन कमीशन. जी सर, उसका अगर आप ये तो कॉन्स्टिट्यूशन है. सर, if your lordship looks at the bylaws को बता रहा है. These are not the rules. Bylaws for internal. यही है. Sorry, I missed the point. Sir, the rules which are here or the bylaws which are here. नहीं जरा एक सेकंड जरा वजाहत कर दीजिए. आप जब रूल्स बात कर रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बात कर रहे हैं? No, PTI के own PTI rules. फिर आप ये वजाहत कीजिए ना जरा. My lord. जी. So the federal under the heading functions F. Your lordship will see F.1. The Federal Election Commission shall develop the bylaws for its internal working in accordance with the Constitution and notify the same on the website. तो आइन इनका वही है. आइन वही है. आइन नहीं बदल सकते. अपनी इंटरनल वर्किंग के लिए नहीं बदल सकते हैं. कोई बदलना चाहे बदल. मतलब then they have to amend it in accordance with the procedure. Amendment file करनी पड़ेगी आपके पास. And then they have to file. What turns on this point of yours? My lord, that these rules as such will not trump the constitution. Which rules are these? These the rules framed by the election commission of PTI. Where are those? Those are at page 98 onwards in part 1. So this probably will be their defense. I take it. This may be their defense. They rely on Rule 28. This, I presume, will be their defense, correct? My lord, yes, and it says, your lordship may see, this probably... What comes in the way of fair and free elections with these rules? What is so offensive about them? My lord, you don't like them? My lord, I'd like to point out to your lordship Rule 28. In case of any vacancy in the Federal Election Commission, including Chief Election Commissioner, the Secretary General or the Chairman shall notify Ad Hoc Election Commission to propose to comprise of Chief Election Commissioner and as many members as may be necessary for holding intra-party election. So we... इसकी तारीख क्या है इनके रूल्स की?
2020. They simply say 2020. We don't know the date, my lord. Even if we read this, how does it change anything? My lord, they are not relying on these rules because this is regarding ad hoc. They don't say I'm an ad hoc commissioner. They're saying I'm a full-fledged commissioner. In the ECP relied on 28. Sir, Should notify ad hoc election commission. So this is not their case of ad hoc. I make this submission because before the ECP, they relied on this Rule 28 to say, I don't understand. to say that the fallback position is that you could regard him as an ad hoc. दोबारा पढ़िए जरा आहिस्ता आहिस्ता से. In case of any vacancy in the Federal Election Commission, including Chief Election Commissioner, the Secretary General or the Chairman shall notify ad hoc election commission to comprise of Chief Election Commissioner and as many members as may be necessary for holding intra-party election. तो पहली बात तो वैकेंसी होना है. अगर हम इसको मान भी लेते हैं, चलिए इसको मान लेते हैं फॉर द टाइम बीइंग. दूसरी बात है सेक्रेटरी जनरल या चेयरमैन नॉमिनेट करेंगे, मगर फिर भी वन मैन शो तो नहीं होगा, फिर भी मेंबर्स तो होंगे ना फिर भी. एंड एज मेनी मेंबर्स एज मे बी नेसेसरी. Yes, my lord. तो वो कह सकते हैं जी चलिए हमारे पास 6 नहीं है, 4 कर लेते हैं. For instance, I don't know. There are two submissions over here, my lord. One, that even this Rule 28 does not envisage a one-man commission. The second submission is that under Chapter 9 on page 192, the requirement of the Constitution is that such members are to be co-opted by the Commission itself. That's one. And secondly, that insofar as the Chief Election Commissioner is concerned, he can't be co-opted. He has to go back to the electoral process. So they are resting the case on Rule 28 or some other one? Before the Commission, they rested on Rule 28, and the Commission, therefore, in its order says... No, anything else which may save them, help them, which you are opposed to? My lord, your lordship may see page 61, part of the Election Commission's order. No, just tell us. We don't want to see it. Yes, my lord, there they rely on it. And let's be fair. Is there anything here which will help them? My lord, our submission is no. Our submission I'm is... asking as counsel, not as representing ECP. My submission as counsel is that the rules, insofar as they are inconsistent with the Constitution... But let's say they are the proper rules. How will it help them? Please tell us those provisions. Our submission is that even if they are, then under Rule 28 itself, the body has to be an election commission. It can't be one person. So they have to explain to you. दूसरी बात आप ये ad hoc नहीं कह रहे हैं कि मैं ad hoc हूँ. That's the third one. हो सकता है कि जैसे हमारे कलीग ने पूछा कि भाई कभी-कभी हो जाता है कुछ for various reasons, emergency ये वो वगैरह, कोई बीमार हो गया, कुछ हो गया, तो वो ad hoc चलिए उन्हें अपॉइंट कर दिया, मगर यहाँ वो ad hoc का केस ही नहीं है, तो आप उनका केस क्यों प्लीड कर रहे हैं? I am only pointing out that in paragraph 16 of its order, the Election Commission notes that they admitted... I don't think that's a relevant point. No, they said the Election Commission noted that they admitted that this was in violation of the Constitution. Have you concluded? My lord, may I draw your lordship's attention to a few paragraphs of the Election Commission's order? I may not read it, your lordship. Before that, can you show us the order and the challenge again now? The High Court order, my lord? Ji. My lord, yes. That the impugned order of the High Court is at page 28. The operative part starts at the foot of the page for the reasons, part 1, page 28, part 1, for the reasons to be recorded later and subject to amplifications and explanations made therein. Yeah, but where do they say anything about the elections? About? In the whole dispute, as I've understood it, I may have understood everything wrong, is the validity of 2nd December election. Where is the declaration of the High Court saying that they were in accordance with law or their constitution, or they were not?
They don't say anything, my lord. They simply First you have to hold that, then whether the symbol of bat will be given or not, that's a subsequent relief. First the initial declaration has to be there. Where is that? That is not. Let's read it again, the whole order. We hold and declare that the impugned order of the Election Commission of Pakistan dated 22nd December 2023 be passed in case number as illegal, without any lawful authority and of no legal effect. But that still doesn't mean that there has been an election. No, it doesn't. आपका order उड़ गया. अब number 2 पढ़ें. The Election Commission of Pakistan is directed to forthwith publish the certificate filed by the petitioner on its website in terms of Section 209 of the Election Act 2017. इससे पहले declaration कहाँ है? Election were in accordance with law. There is none, my lord. So this will only follow that declaration. There is no such declaration. Yes, the elections were held proper, whatever, and then issue the certificate and issue the election symbol. But I find that declaration missing. That is missing. My lord, I can only presume. They presume to be acting. The presumption appears to be that under 209, under Section 209, once the certificate is given, that is conclusive of the matter. The Election Commission cannot see whether the elections were fair or foul, proper or improper, in accordance with law or otherwise. जमहूरियत के तकाजे पूरे नहीं हो रहे हैं. देखिए इस सब चीज का जहां तक मैं समझ चुका हूँ, कुछ चीजें टेक्निकल है, ये करो, ये कागज फाइल करो, सेक्रेटरी जनरल ये फला, चले वो हम सब नजरअंदाज कर देते हैं. एक बुनियादी चीज है जमहूरियत मुल्क में भी होना चाहिए और जमहूरियत पार्टी में भी होना चाहिए. ठीक है, आपको टॉलरेट करना होता है गिव एंड टेक, कभी आपके मुखालिफिन भी आ जाते हैं कभी. तो बुनियादी बात तो जमहूरियत की है. आर्टिकल 17 तो यही कह रहे हैं ना. तो आर्टिकल 17 का डिक्लेरेशन तो दें. हाई कोर्ट आपने कहा ये आपका इलेक्शन मुस्तरद हम करते हैं, हम इसको नहीं मानते. ठीक है, आपने गलत कर दिया, तो हाई कोर्ट फिर इसको ठीक करे ना कि नहीं ये इलेक्शन सही थे. That finding is not there. अगर वो इलेक्शन सही थे फिर उनको सर्टिफिकेट भी उनका मानना चाहिए, फिर उनको इंतखाबी निशान भी देना चाहिए, फिर तो सब चीजें फॉलो करेंगी ना थ्रू. That are consequential reliefs, not the main relief. This is the exact problem we are facing. Yes. We do not know where the reasons will go. उन्होंने कहा reasons amplify कर सकते हैं, but this is a fundamental prayer which seems to be subject to saying it aloud, so they make a note of it and they address it. Where is that declaration? Because the prayers you will see kindly declare that the elections held on 2nd of December 2023 were in accordance with the constitution of the political party and in accordance with law and the whatever. Because they will amplify the reasons within the ambit of the short order. And then the next step will be and consequential relief, including accepting the requisite certification, issuing the symbol, doing 500 other things if they're required to be done. But those can follow, or even if they're not written, those can be implied. But the declaration can't be implied, or can it be implied? My lord, there is no such declaration. And also, if your lordship looks at the petition, they didn't even pray over there that the elections were held properly. Are you sure? There is no petition kahan hai unki? My lord, your lordship will see page 49, which is the prayer clause. Please read them. My lord, hold and declare that the impugned order is without jurisdiction, without lawful authority and illegal, and as a consequence thereof, set it aside forthwith. Hold and declare that proceedings by ECP to question the validity of the IPEs on the basis of... IPE क्या होता है? My lord, intra-party elections. I don't know why people don't write the whole thing, intra-party elections. On the basis of any objections, filed by any persons were quorum non-judice, illegal and without lawful authority. I can't understand. Hold and declare that proceedings by ECP to question the validity of the IPEs on the basis of any objections filed by any persons were quorum non-judice, illegal and without lawful authority. Why? I mean, anybody can go and complain. So I was just reading why. My lord, because I don't understand this prayer. Chale, next go to the C prayer. Yes. Find and declare that election symbol has been illegal,
and unlawfully been withdrawn, which is inter alia violation of fundamental rights of the petitioners, including Article 17 and Article 25 of the Constitution, direct the Election Commission of Pakistan to forthwith publish the certificate of PTI on website of ECP as required by Section 209, paragraph 3, in the interest of justice, and to restore its election symbol forthwith. In the meanwhile, suspend the impugned order, so on and so forth. They have not sought the declaration. They have not, my lord. The reason appears to be, if your lordship takes a look at page 40. Because if they get a declaration, they may have left out C, D, E. Yes. And I would say the implied praise, and you have to do that once the declaration has been given of free and fair or whatever elections they've held, or in compliance with their own constitution. You see in paragraph A, I think Yes. they will, Yes, my lord. obviously they will respond to Page 43. I will like to know their lawful response. authority. My lord, They have challenged the authority as well as the jurisdiction. Now they has to explain us whether That ECP is the- can check the inter-party elections or not at this stage, and whether it was a voidable or that is the central point. negligible. I wanted to draw your lordship's attention to ground A. इसीलिए इधर वो ऑर्डर आ जाएगा लाहौर हाई कोर्ट का लर्नेड सिंगल जज का। उन्होंने ये बात की कि ये फ्रेज उस वक्त मैं दे सकता हूँ कि मतलब स्ट्राइक डाउन कर दूं इलेक्शन एक्ट के कौन से दो सेक्शंस थे जी 209 and 215(5). वो उनकी वहां तक तो बात अब समझ आई मुझे जाकर के कि उन्होंने क्यों कहा। अब शायद समझ आ रही है बात को। चले आपकी बात हम मौके समझ गए, कोई और बात नहीं है तो हम आगे बढ़ें। But may I just show to your lordship ground A? That is the case they are setting up, and that's why they are not seeking the declaration of the election. According to them, ECP has no jurisdiction to challenge the internal appointments of officials of PTI or set aside PTI's intra-party election held on 2nd of December 2023 and declare them void. As such, the impugned order is not sustainable in law. ECP is not a court of law and cannot question the appointment made by any political party or examine the validity of a political party's intra-party election. But doesn't these prayers violate the constitution then? Our submission is yes. Because you are saying something, I'll do whatever I want to do. Yes. I mean, contrary to my own constitution, I don't know. I would want certainly assistance of Hamid Khan Saab. And be prepared to be clean bold, Mr. Makhdoom Ali Khan. My lord, may I just, 2 lines from this page, ground B, last 2 lines. They talk about the role of the Election Commission. Only role is to keep a record of the party's constitution and changes, then keep record of elected officers, record sources of funds and campaign Now, finance. can you quickly go through the provisions of the Election Commission in the Constitution of Pakistan? My lord. Start from there and proceed with the law. My lord, yes. Quickly. Yes, my lord. Your lordship may turn. I'm sure you're tired standing up, but My we lord, at least have the luxury of sitting down. But anyway. My lord, if your lordship may graciously take a look at articles 213 onwards is the Election Commission, but the relevant 230 or 230? 213, my lord. 213 on is are the provisions relating to Election Commission. The relevant one over here would be 218. Subsection 3. No, but the whole, ये पूरा chapter elections पे. Ji sir. Part 7. Yes sir. And 218(3). 213 है, हाँ. To 218, paragraph 3, it shall be the duty of the Election Commission to organize and conduct the election and to make such arrangements as are necessary to ensure that the election is conducted honestly, justly, fairly, in accordance with law, and that corrupt... ये तो general elections की बात है. Then sir, Inter-party election का जिक्र है इसमें कहीं? सर इसमें नहीं है, सिर्फ एक तरह से आता है 219. The Commission shall be charged with the duty of, and if your lordship may turn to clause E, such other functions as may be specified by an act of Majlis-e-Shura Parliament. अब वो जो इलेक्शन एक्ट है उसको अच्छा, तो ये आ रहा है 219E के जरिए. E के जरिए इलेक्शन एक्ट 2017. या तो उसको चैलेंज करें. Yes. अच्छा, एक तो ये हो गया. अब बुनियादी हकूक, इन्होंने 2 बुनियादी हकूक का तस्करा किया है अपनी प्रेयर में. एक है 17 और एक है 25. My lord, on
Article 70. एक जरा सी बात सुन लीजिए ना। 17 कहता है कि हर शख्स को इलेक्शन में वोट डालने का हक होगा और पॉलिटिकल पार्टी बनाने का हक होगा। सर, इस पे तो कोई आपकी कोई राय, मनफी राय तो नहीं है ना? नहीं सर। हाँ, नो सर, नॉट एट ऑल। अच्छा, फिर 25 क्या कहते हैं, सबको आप बराबर ट्रीट करेंगे? सर, इस पे भी आपकी कोई? नॉट एट ऑल। नो नो नो। ये जो सिंबल वगैरह का जो जिक्र है, ये सारा इलेक्शन एक्ट में आता है। माय लॉर्ड, सिंबल का जिक्र कहाँ आता है इलेक्शन एक्ट में? इलेक्शन सिंबल कहते हैं उसको, क्या कहते हैं? चैप्टर 12 ऑफ द इलेक्शन एक्ट रूल्स मेरे पास। इलेक्शन 212 के बाद ही है। जी सर। आइन में तो तस्कर नहीं है ना? नहीं सर। जी सर, एलोकेशन ऑफ सिंबल्स इज 214। The Commission shall prescribe a list of election symbols for allocation to political parties, and candidates and the symbols in the list shall be visibly and perceptually different from each other. 215. Notwithstanding anything contained in any other law, a political party enlisted under this act shall be eligible to obtain an election symbol for contesting elections for Majlis-e-Shura Parliament, provincial assemblies or local governments on submission of certificates and statements referred to in sections 202, 206, 209 and 210. If your lordship may see the next provision, a combination of enlisted political parties will get symbols. And then if your lordship may see 5, if a political party or parties to whom show cause notice has been issued under subsection 4 fails to comply with the provisions of section 209 or section 210, the commission may, after affording it or them an opportunity of being heard, declare it or them ineligible to obtain an election symbol for election to Majlis-e-Shura Parliament, provincial assembly or a local government, and the commission shall not allocate an election symbol to such political party or combination of political parties in subsequent elections. Is it your case that the only reason political parties will comply with any direction of the election commission to hold election is when you hold this stick in one hand? Otherwise, they'll say, we won't hold elections. Otherwise, or is there some other mechanism also? My lord, there is a mechanism that if given the time frame in their own constitution, if they वो तो आगे पीछे हो सकता है। जैसे आपने अब वो वाली बहस तो हमारे सामने नहीं है। आपने साल दे दिया उनको। उस टाइम फ्रेम पे भी हम उनको सिर्फ फाइन कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। वो छोटा सा फाइन है, वो दे के आगे बढ़ जाएंगे। But if we want to enforce Article 208, elections within a political party, and 209, then the elections should be in accordance with the constitution of a political party. If we don't have the power under 215(5), then these provisions will be purely advisory in nature. There will be no obligation on political party to comply with it, because this election. मुझे याद आ रहा है वो धरना केस में इलेक्शन कमीशन ने कोई बात की थी, पता नहीं, उन्होंने कहा था कॉस्मेटिक है, फिर उन्हें अपोलोजाइज किया कि लॉ इज नॉट कॉस्मेटिक। आई डोंट नो व्हाट प्रोविजन देयर इज, देयर वाज समथिंग मेंशन्ड देयर व्हिच टुक ग्रेट एक्सेप्शन टू दैट। हाउ कैन यू talk about the law cosmetic? You are bound by the law which gives you the powers also, and that's part of your lordship's judgment, and we'll place that judgment on the record that this is what your lordship. That's not relevant to this case, so is it? My lord, it's relevant to this case, and there are a number of other determinations by this honorable decisions by this honorable court, where this honorable court has said that the election commission is a body which has been created to ensure that elections are held in a fair manner. No, not the general elections. Inter-political party वाले. My lord, intra-party पर भी judgment. वो वाले judgment दीजिए. साहब, वैसे इसमें और भी कोई judgment है जिसमें ये the question of inter-party elections were made subject matter of any judgment? My lord, your lordship must see this. In which violation was treated so grave. My lord, if your lordship perceive where the observations are, this is PLD 212 Supreme Court. PLD 212 Supreme Court 681. ये आपकी बुकलेट में है? जी सर, टैब 8. ये वाली बुकलेट। ये आफ्ताब अहमद खान शेपॉप केस आप कह रहे हैं, ये कौन सा? My lord, नंबर कौन सा होता है? My lord, टैब 8. टैब 1. टैब 8. Okay.
It means workers' party. Yes, my lord. ये क्या फरमाता है? Irrelevant. My lord, paragraph 42, I'll read 40 later, but 42, the parliament has framed different laws to effectuate the above constitutional provisions and to regulate elections to the national and provincial assemblies. ROPA reiterates and further vests the election. In material terms, is a vast difference between ROPA and the present election act. My These lord, provisions, कोई खास फर्क है वही है. My lord, some of these provisions are new, but otherwise it's Only 2 and 5 is new, otherwise all the rest. all the rest are the same, my lord, except for 5, subsection 5 of 215. But your lordship, No, has it been, was there in ROPA also 215.5? no, in ROPA there was no 215.5. 215.5 has not been challenged. No, my lord. ठीक. My lord, regulate and check intra-part, your lordship will see further vest the election commission with the responsibilities and powers to inter alia regulate and check intra-party affairs and actions taken by candidates and parties in anticipation of and on election day, resolve all election disputes, declare the election void, so on and so forth. The last 3 lines, the law therefore entrusts the election commission with exclusive, broad and extensive powers to attend to all issues related directly and ancillary to the election process. ठीक. Next case. My lord, my lord, your lordship's judgment in the suo motu case number 7 of 2017, PLD 2019. दूसरी बुकलेट Supreme Court, my lord, it's in volume 1, tab 9. इसमें क्या आपने कहा? Sir, on page 343 of tab 9, paragraph 33, the Election Commission is a constitutional body and the Constitution stipulates that the Election Commission shall ensure that the election is conducted honestly, justly, fairly and in accordance with law and that corrupt practices are guarded against. The Election Commission is also required to undertake such other functions as may be specified by an act of Majlis-e-Shura Parliament. Article 17(3) of the Constitution requires political parties to account for the source of their funds, and Section 211 of the Election Act demands that detail of election expenses be provided. The Election Commission confirmed that TLP did not account for its fund and election expenses, but surprisingly professes its helplessness because the law according to it is cosmetic in nature. And so this is what I recalled. The Election Commission should disabuse itself that constitutional and legal provisions are cosmetic. The responsibilities placed on the Election Commission by the Constitution and the law must be fulfilled. They are not optional. इसमें तो वो इलेक्शन एक्सपेंसेस वाली बात नहीं है. नहीं, इसमें इलेक्शन एक्सपेंसेस वाली बात नहीं, but there's a provision which आपके पास कुछ चल भी तो रहा था ना मैटर, हम अखबारों में पढ़ते थे क्या एक्सपेंसेस वाला केस, उसका क्या बना? फंडिंग या क्या? They found a violation, my lord. हाँ? They found a violation. नहीं, उसका बना क्या था? हतमी नतीजा क्या बना उसका? जो कंट्रीब्यूशन वाला केस में हमने फाइंडिंग देखी, वो किधर है? वो सर वो उनको पता होगा. वो उसमें सर हमने रिपोर्ट दी थी. ये क्या हतमी फैसला क्या हुआ उसमें? फैसला रिपोर्ट नहीं पूछ रहे. The commission found out that there were funds that were received from sources prohibited under law, and a show cause notice issued. उसका final फैसला नहीं आया show cause का, to my knowledge. That is still pending. फैसला नहीं आएगा क्या मतलब? जी, कानून की रिक्वायरमेंट ये थी कि पहले इलेक्शन कमीशन ये तयन करेगा कि क्या आया प्रोहिबिटेड सोर्सेज से पैसे आए हैं, अगर आए हैं तो शो कॉज करेगा. कमीशन ने शो कॉज कर दिया, उसमें फिर शो कॉज प्रोसीडिंग्स अभी तक पेंडिंग है, उससे कोलैटरल लिटिगेशन होती रही. और आई अंडरस्टैंड ये तो कब से चल रहा है? जी 2014 से. उसमें सर ये अभी एक सिंगल बेंच का फैसला था, सर विद योर परमिशन, और उन्होंने कहा कि आप एविडेंस रिकॉर्ड करें, which we have challenged, that we have already undertaken the exercise and we need not to further record evidence. There is a judgment of a single bench of the Honorable Islamabad High Court. We have challenged that through IC. अभी 9 साल हो गए अभी तक नहीं हो रहा है. There are multiple litigations. Our orders are challenged one after another, and there are. चलिए
G, and please proceed. My Lord, this is the... How long will you take? I hope shortly. My Lord, very short. PLD 2018, Supreme Court 189. 2018. Supreme Court 189. This is at tab 7 of this volume 1, which your Lordship was just reading. Page is 238. Relevant page is page 238. Your Lordships, on page 238, notice Clause E of Article 219 of the Constitution, and the last 4 words on this page. The ECP is an independent and autonomous body which exercises executive and regulatory powers derived from the Constitution. Though it has the power to appoint election tribunals and so on and so forth, my Lord, the ECP itself is a supervisory body which exercises regulatory and administrative powers under the Constitution and the law. The next paragraph, my Lord, the 5th line, your Lordships, we have highlighted that for your Lordships as well. Besides being a limb of the executive that is charged with the duty to conduct and oversee elections in the country, we find that the ECP must necessarily possess the power to collect facts, information and data that enable it to properly and effectively perform such duty. Such a capability represents the constitutional and inherent legal power of ECP. Therefore, in exercise of its powers under Article 6 of the PPO read with Rule 6, the ECP has all the necessary authority to ask for and collect the requisite information and facts that enable it to decide and determine whether the contributions or donations accepted by a political party are prohibited under Article 6(3). Without such power, we are of the opinion that the ECP's power to decide as to whether a political party is receiving contributions or donations from sources prohibited under Article 6(3) would for all... Which party was this? My Lord, it was the case of PTI. This was a case... ये judgment तो ये 18 का है, अभी तक इस पे अमल नहीं हुआ है? Sir, not as yet. Right? Such a result would be against the clear command of Article 17(3). Are you disregarding a judgment of the Supreme Court? No, my Lord, we have not. We have then proceeded accordingly. That those proceedings have taken place, which my learned friend Mr. Ahmed Hassan was informing your Lordship about. The show cause proceedings are still pending. My complaint to the commission that the funds were being... फैक्ट्स पे नहीं जाए ना, अभी तो इसमें तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दे रहा है ECB को कि काम करो इसका, तो क्यों नहीं किया? ये तो 2018 का जजमेंट है. For the reason stated कि जी collateral litigation है, there is no other reason to my mind. सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है. जी बिल्कुल सही बात. चलिए अगला बताइए. Paragraph 47. We find it hard to fathom the contention that the intention behind the PPO and the rules is to take away the administrative and regulatory power of the ECP derived from the Constitution to call for any record, information or data from a political party, to ascertain the sources of its contributions and donations, and to place such power exclusively in the hands of a party appointed chartered accountant. Learned Counsel has not been able to show us from any provision of the PPO and the rules framed thereunder, nor from any other principle of law laid down by this court, that failure by the ECP to object the audited statement of account of a political party before its gazette publication would tantamount to the acceptance of the said accounts, and that thereafter the ECP would become functus official. My Lord, 48 also I just referred, that has been highlighted. My Lord, the next judgment is at tab 13. That's a PLD 2018, Islamabad 300. That's a judgment of a learned judge. We have highlighted the relevant portions. यही 3 आप कहना चाह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, या कोई और भी है? These are cases, 35 cases which ECP filed CPs. जी वो करें. जी किधर गया? My Lord, may I just submit that to conclude on this proposition, our respectful submission is that the duty of the ECP to declare that a political party is ineligible for an election symbol when it fails to hold intra-party elections in accordance with its constitution is actually made redundant by the judgment of the Peshawar High Court, and so also are sections 209 read with section 215(5). Because if we do not have that power, then it has far-reaching consequences. We cease to be a body which can have any
control over intra-party elections. बस My lord, this was the submission on this. There are couple of... ये आपका राइट ऑफ रिप्लाई भी होगा ना? जी सर. अब आप हमें भी जरा... May I just point out one thing? That recently... आप कोई और बात तो बताएं? My lord, the preliminary objection that they have taken, I can... देखिए हम आपको जो आप अभी तक आपसे बात समझ आई है वो सारी बात घूमती है इनकी अपनी इलेक्शन के बारे में, ठीक है? ये इन्होंने केस जरा कहीं और ले गए, बट बुनियादी बात जो आपका एतराज़ था इनका, और यह एतराज़ आज से नहीं, मतलब जब ये हुकूमत में भी थे कि भाई आप इलेक्शन तो करा लें अपनी पार्टी के, तो उन्होंने कहा जी हाँ देर हो गई वगैरह वगैरह, हमें साल दे दें, आपने साल दे दिया। फिर आपका कहना ये है कि आपने जो इलेक्शन कराए सही नहीं है। ये बुनियादी सी बात है सर। अगर वो इलेक्शन सही है तो मेरे हिसाब से मे बी सब्जेक्ट टू करेक्शन, बाकी रिलीफ विल ऑटोमेटिकली फॉलो। फिर सर्टिफिकेशन आप लाजिम है आप पे, इनका इंतखाबी निशान देना लाजिम है आप पे, वो तो मेरे ख्याल में ऐसी चलेंगी। और अगर ये नहीं दिखा सके कि इलेक्शन उन्होंने सही तौर पे किया है तो शायद इनको फिर कॉन्सिक्वेंस सफ़र करेंगे। अब दो तीन कानूनी बातें भी खड़ी हो गई हैं। एक बुनियादी कानूनी बात है, खान साहब आप ये नोट कर लें, एक बुनियादी कानूनी बात है कि डिक्लेरेशन इन्हें नहीं मांगा कि भाई जो हमने इलेक्शन कराया है बिल्कुल सही है, वो उन्होंने कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ पे चले गए। कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ को उर्दू में क्या फरमाएंगे? नताइज और अमामिल। ठीक है, तो वो ज्यादा फोकस उधर चला गया है, वो बेसिक बात खत्म हो गई है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि वो जो अभी हमने, अच्छा एक बात हम वजाहत कर लें, अभी मालूम किया था कि जो ये 2 पिटिशंस थी, ये अभी मजीद मालूम हुआ है कि वो आज लगी थी और आज उन्होंने बैरिस्टर अली जफर साहब ने तारीख ली है दोनों में। ये आज की पोजीशन है। तो जब एक मसला वहां खड़ा हुआ है तो वही मसला पेशावर जा सकता है या नहीं जा सकता है। My lord, और तीसरी बात जो आई है वो इसको नजरअंदाज कर दें कि अगर ये पिटिशन ना भी थी, पेशावर हाई कोर्ट के पास टेरिटोरियल या कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन था। इस पे आपने हमें कोई बात नहीं मदद की। सर मे आई वेरी क्विकली माय लॉर्ड, समीर का कहना है क्योंकि हमने इलेक्शन इधर करा है इसलिए पेशावर हाई कोर्ट का जुरिसडिक्शन है। ये इसको सेक्शन 20 CPC जो है ना, द कॉज ऑफ एक्शन पार्टली और होली अराइज, basically that has been interpreted in so many judgments of the Supreme Court with regard to Article 199 and territorial jurisdiction. उस पे भी आप अपना, क्योंकि वो आपने रेस किया है तो सर the direct judgment on the point and observation of this honorable court is in the case of Lieutenant General Salahuddin Tirmizi versus Election Commission of Pakistan, where first the... Is it in the books? My lord, it's there. It's tab 6 in volume 1. And the relevant observation is at page 760. PLD 2008 Supreme Court 735. Page 760. I have highlighted the portion, my lord, but I'll read it. 760. Was there some previous cases also? Yes. In the present case, Election Commission, while discharging functions in connection with the affairs of Federation within the territorial jurisdiction of Islamabad High Court, passed an order in respect of NA20 Mansehra, a constituency of province of NWFP. Therefore, the objection relating to the jurisdiction and maintainability of writ petition before the Islamabad High Court would be of no significance. It may be pointed out that in the light of principle laid down by this court regarding the exercise of such jurisdiction in such situations, the order passed by the ECP, which functions at Islamabad in respect of the constituency of province of NWFP, would be challengeable both before Islamabad High Court and Peshawar High Court. This concurrent jurisdiction is, however, subject to the rule of propriety, according to which a High Court having jurisdiction in a matter
if it has exercised such jurisdiction, the other High Court, which has also jurisdiction in the matter, may restrain from exercising its jurisdiction. In view thereof, in the present case, propriety demanded that subsequent order passed by Election Commission of Pakistan should have been challenged before the Islamabad High Court, and the jurisdiction of Peshawar High Court should not have been invoked. पुराने वाली ब्लाग है, संदल बार है. Ji sir, they are all there. This I point out because this is directly an Election Commission case where it was first challenged. The first order was challenged in Islamabad. The second order was challenged in Peshawar High Court. The Supreme Court They have also said that the concurrent jurisdiction for the both courts. They've said there is concurrent jurisdiction with both courts, but propriety is that if you have gone to a court once in the case of the first order, then for the second order, you should also go to that court. In concurrent jurisdiction, because the order was passed for the constituency of KPK, therefore they held that the concurrent jurisdiction. Yes, my lord. But what do you say in this case where the order has been passed at Islamabad and the elections and But this order is for the whole of Pakistan. This order is for the whole of Pakistan. It can be challenged. Now, देखिए उनके elections. Suppose you found that the elections of a political party, to the extent of the federal offices of Punjab, Baluchistan were all right, but only the Khyber Pakhtunkhwa, these persons who came said कि जी हमारे यहाँ सही नहीं हुआ. So that would of course give maybe Peshawar High Court. You are not saying that because the Election Commission of Pakistan is based in Islamabad, the primary jurisdiction is Islamabad. That's you're not saying. No, I am not saying that. What I am saying is that when I passed the first order invalidating their election. Where did you pass that order? 23rd, 11th. Where? My lord, that order was passed in Islamabad. No, both orders were passed in Islamabad. Both orders were passed in Islamabad. First time round, when the order is passed on 23rd of November, they go and they challenge it before the Lahore High Court. Second time, those elections were held in Lahore? No. नहीं वो जो PTI के इलेक्शन वो जो 2022 वाले थे वो कहाँ हुए थे? जो अंडू हो गए बाद में. According to ECP's instructions, they were in Islamabad. First election. Yes, according to ECP. My lord, the second time round, when the election commission. देखिए अब हमारा एक और भी ऑर्डर पास हुआ है ना, लाहौर हाई कोर्ट ने पास किया, वो पूरा पाकिस्तान में इलेक्शन रुकवा दिए. अपनी टेरिटरी तक तो आप ऑर्डर करें, मगर पूरे पाकिस्तान में आई डोंट नो उसकी कोई रेलेवेंस होगी या नहीं. वो मैटर पेंडिंग है अभी या नहीं पेंडिंग है? My lord, that matter is pending. That is your lordship's order in. बहुत जल्दी में लिखा गया on I think the day I was leaving. 16th of December को लिखा है ना? 15 दिसंबर का ऑर्डर है सर. I was leaving on 16th early morning. It's in CPL civil petition number 4365 of 2023. उसकी रेलेवेंस कोई है इसके? My lord, the relevance is from the point of view to show to your lordship in terms of the preliminary objection, but may I come to that in a minute as I come to that preliminary objection. On this issue of propriety, this honorable court has said if you have challenged the order of a constitutional body in one high court, then when that constitutional body understood that point passes the second order, go to the same high court. My lord, the second submission is that order will in rem or in personam. My lord, that order, according to your lordship's jurisprudence, is an order in personam. But if your lordship takes a look at then this of Mr. Justice Jawad Hassan's judgment in the Lahore High Court, where he says this petition is not maintainable unless you challenge the provisions of 215 paragraph 5. Now, my lord, if that is done, if the vires of a petition is challenged, then a notice to the Attorney General. There is very common phenomenon of this aspect of the case. Sometimes one levy imposed by FBR that is declared illegal by Sindh High Court, but the said levy is affirmed by the Lahore High Court. Even in the case of Semini, there is a distinction of the judgments. One High Court has declared it ultra vires, and while the Sindh High Court has declared it intra vires. So in both situations, the judgments are pending and appeals are pending in this court to reconcile. Yes. So this is also an aspect of the case. That what is to be done if the one High Court declares this and second High Court declares this? My lord, there is a law, is a federal piece of legislation. I point out. If I may just think aloud, those importers, there may be importers in Lahore,
There may be importers in Karachi. So they have to show some nexus. I mean, if the importer is based in Lahore and the port of entry is Karachi, I don't think Pakistan High Court will have jurisdiction. Correct, madam. Yes, madam. So probably you have to show some nexus with that territory. Why are you going to this and not going, and you're not shopping for, what is the word? Forum shopping. Forum shopping. So maybe there is this thing, but I don't think we need to go into that detail. Also, I want to make it clear that we will not consider, because nobody's raised this point, the vires or otherwise of section 215(5) or any other provision, because that's not under challenge. Yes, ma'am. Because Lahore High Court has made observations that this can only be done if they are challenged, but has not given a view on the matter that they are in accordance with the Constitution or not. So that is for another day. Yes, my lord. Yes, my lord. Because if that was the case, I would say in particular. Don't say it. All right. But say it when that day comes. Generally, an issue of no, not virus, not virus. But generally, if there's an issue with regard to the interpretation of the Constitution, even then, under Order 27A. नहीं वो बात तो अब तो बदल गया, अब तो 5 मेंबर बेंच बनना होगी ना, अब तो वो आईनी उस पे हो जाएगा ना इंटरप्रिटेशन पे. I'm saying in the High Court, my lord. हाँ वो 27A की वो तो उन्होंने सिर्फ कहा कि अगर मैं ये रिलीफ उस वक्त दे सकता हूँ जब ये चैलेंज हो, और ये चैलेंज नहीं हुआ है तो उसको वो तो नोटिस देते कि जब वो चैलेंज होता. But even the Peshawar High Court judgment. ये पॉइंट लिया है, वहाँ भी नोटिस नहीं किया आप कहते हैं. No notice to the Attorney General by the Peshawar High Court. What? No notice. The Federation was not a party. दिखाएं जरा ऑर्डर दोबारा. Sir. Page 28. Page 28. This is one of your grounds in the petition. In the petition. I must compliment my brother. He's read the petition. I didn't get opportunity to read it. इसमें पहले बताएं parties किधर हैं? Sir, the parties are there. On which page? Petition कहाँ है? Sorry. Petition, my lord, is at page 30 to 53. If your lordship may. I want to see the array of parties. They are there on page 31. CJP is page Election Commission of Pakistan. And then these are the private complainants, my lord, the PTI complainants, and that's it. Pro forma respondents. No forma respondents हो गए. And then your lordship will see, they go all the way. What is the point involved? They go all the way to 15. You were on notice. My lord, Election Commission is a party. Election Commission is a party. My submission is that if a question arises with regard to the interpretation of the Constitution under Order 27A of the CPC, a notice to the Attorney General is mandatory in view of the... No, but if we agree with you, then we can't hear this case. Then it will be a 5-member bench. No, my lord, my submission is this. ये आप सिंपल कह सकते हैं कि नोटिस देना चाहिए थी 27A की, बस बात खत्म. बस यही बात खत्म. मजीद बात करेंगे. नहीं, मजीद नहीं कर रहा. वो फिर आ जाएगा सेक्शन 4 है या क्या प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का. जी सर, then it will require 5-member bench, not less than 5 members. चले वो आप काबिल वकील आपके नहीं थे उधर. So there, I hope you're not saying that the council representing the Election Commission of Pakistan before the Peshawar High Court was not a Qabil. No, the Election Commission don't say this. The Election Commission of Pakistan was very competently represented. I'm just pointing it out. My lord, the other... that was just a side note. My lord, saying so. Other issue is that a number of respondents were not even served. Respondents number 3, 4, 5, 9 and 11 were not served. Private respondents को सुना या नहीं सुना? The complainants Sir, before you. Some were heard, but the following number 3, 4, 5, 9 and 11 were not even served. इनके वकील तो थे, देखें 2 and 7 के भी थे, 8 के भी थे, 10 के भी थे, 12 के भी थे. जी सर. और 13 के भी थे. अब वो कोई सर्विस अवॉइड कर रहा है, इलेक्शन ही खत्म हो जाए. 3, 4, 5, 9, 11 के नहीं थे, but वो बात मेरे ख्याल में ज्यादा इलेक्शन मैटर्स में जरा लचक रखना चाहिए. अगर हम सब पे सर्विस को जान से अवॉइड करेगा कि इलेक्शन गुजर जाए फिर मैं सर्विस करूंगा. My lord, the last submission relates to the technical objection raised. My lord, when your lordship goes back all the way up to the case of Javed Hashmi, your lordship will see it is reported as PLD 1989 Supreme Court. PLD
1989. 89 Supreme Court, page 396. This is just to show your lordship the title of the parties. ये आपकी बुकलेट में नहीं है ना? Sir, ये बुकलेट booklet में नहीं है, sir. जी, इसमें क्या Because this लिखा was a था? preliminary objection raised. Now your lordship may just look at the title of the parties. This is a 5-member bench. Election Commission of Pakistan was the petitioner. तो आप कह रहे हैं कि ये ग्राउंड नहीं ले सकते हैं. That is the submission, my lord. How do you distinguish those two cases? My lord, That learned senior counsel has cited. My lord, in neither of those cases relate to the Election Commission. To start with, I would also seek your lordship's leave to place on record a list of 35 cases where your lordships are dealing with appeals filed by Election Commission. And your lordship may already also consider one point. Please give a list to Mr. Khan Saab. Khan Saab को भी दीजिए. जी. And your पेंटिंग तो फर्क नहीं पड़ेगा ना, नहीं सर, फिर भी आ सकता है. disposed of the list. And your lordship may also see your lordship's judgment on 22nd. इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. Decided. जी सर, 2nd of January. Disposed of, I don't know what it means. It could be dismissed for non-prosecution. सर ये डिसाइडेड थे, ये अभी जो मोस्ट रीसेंट है ये 2 जनवरी 2024 का है बाय दिस वेरी बेंच. ये देखिए बुनियादी सी बात है. I don't know. If you can be sued, so can you sue. I mean, ये तो बड़ा अजीब सा होगा ना. You can be sued, suffer the consequences, and you can't even appeal. And the second, I don't know. It's not. the second doesn't sound fair. The second submission would be. या तो कहेंगे you can't be sued. फिर तो वो उनको मसला खड़ा हो जाएगा. You can't file a writ against ECB. My lord, the reason why I pointed out federation and all that was that when your lordship looked at the array of parties on page 31, the only official party is the Election Commission. If I cannot sue, then a judgment which will relate to... कमीशन जावेद हाशमी के केस में इलेक्शन कमीशन ने चैलेंज किया था लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच का जजमेंट जो रिट पिटीशन में फाइल हुआ. जी सर. रिट पिटीशन में My lord, and it stands to reason, because in this case, if your lordship examines page 31, I am the only official respondent who is there. If I can't challenge it, then there can be no challenge, and the Peshawar High Court judgment will have finality, and your lordships will have no power under 185. Now, we could probably carve out an exception, which I don't think would be applicable, would be if an allegation of a personal nature is made against a particular member or members of the Election Commission of Pakistan, that you as Election Commission cannot challenge it, that particular member, suppose the writ of quo warranto, but you can't hold office. So naturally it doesn't affect the Election Commission of Pakistan, and that member may challenge it, but not the Election Commission. But I mean, I don't know, does it not stand to reason if you can be sued, so Yes, can you sue? that is our submission. That is our submission, and the two cited judgments were dealing with statutory bodies. Yes. So I don't know how persuasive they are. Anyways, we keep our mind open. This is an electoral body which makes all these decisions. Got it. Anything else? That's all. चलिए आइए खान साहब, आप कल शुरू करना पसंद फरमाएंगे? आप कल शुरू करना पसंद फरमाएंगे या आज? आपकी मर्जी है. Fresh? You look tired. We are also tired. Your Lordship was very kind to offer that it can be on Saturday morning as well. So हाँ, अगर खत्म नहीं हुआ हम चलाएंगे. देखें, हमारे आपको बार-बार हम ये कह रहे हैं इस अदालत से इलेक्शन हम करवाएं ना चाहते हैं. सब लोग भी ज्वाइन कर ले ना कि इलेक्शन होना चाहिए, बस जी हो. बिल्कुल बात तो वहीं पर है. हम साहब कल का आपका क्या? कल कितने बजे रखें? कल जी जैसे नहीं आपकी मर्जी है. देखिए असूलन कल के हफ्ता है ना, हफ्ते को कोर्ट बैठती नहीं, मगर हम आपकी खातिर बैठे हैं. जो टाइम आप कहेंगे हम बैठेंगे. इसे जो टाइम नहीं आप बताएंगे. दी मॉर्निंग आवर्स बताएं. आप नहीं आप बताएंगे. आप इतनी कम कदर करते हैं सीनियर बुकला की कि उनसे टाइम पूछ लें. अगर आप 6 बजे कहेंगे तो शायद हम कहेंगे नहीं सर आज आगे बढ़ा दें. Let it be 9:30 then as usual.
आप ठीक है, कुछ आपको कुछ गाइड कर रहे हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस? You want to make it 10? Actually, some instructions. ये 10 बजे कर लें. We will also put in some thing in writing, because particularly the questions that have been raised, which I'd like to. Would you want? Have you been provided with these books? में लेके Have you आएंगे been बना के. provided with these books? हामिद मिल साहब, गई आपको? जी, जो इन्होंने कुछ ये केस लॉ की बुक्स हैं, दे दीजिएगा मखदूम साहब इनको एक सेट. आप कल बना के लाएंगे, कल ही लेके आएंगे जो भी पेपर्स आपने तो बनाने. चलिए 10 बजे रख लेते हैं, हो सकता है फोटो कॉपी वगैरह में टाइम लग जाता है, तो 10 बजे वो आप ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द हियरिंग भी हम ले सकते हैं, मगर आगाज तो कर लेना जरा, इस बात को खत्म कर लें वन वे और द अदर. ठीक है सर. वी आर इन योर हैंड्स. Whatever you want, we will accommodate you to the extent of time. Kind of your option. My lord, may I? ये ना समझें कि हम आपका इलेक्शन आपको सुनेंगे और आपको भी सुनेंगे जी, मगर आपके कोई, अच्छा हाँ एक बात है, कोई मजीद पॉइंट्स हैं उनके अलावा? जी मैं सिर्फ इजाफी गुजारिश करूंगा, मैं रिपीट आज नहीं कर सकते हैं, 2-4 पॉइंट्स 2-4 मिनट्स में आप कर दें, फिर इनको फ्रेश स्टार्ट मिल जाए. मैं बिल्कुल इजाजत देता, जल्दी कर जी बिल्कुल. पहली तो गुजारिश ये करता हूँ कि सर कि आई एम कॉन्शियस. आप उनसे एग्री करते हैं या नहीं करते हैं? जी करता हूँ. मैं सिर्फ ये वजाहत करना चाहता हूँ कि क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जो केस प्रेजेंट किया है जी, आप रेस्पोंडेंट नंबर 10 जी 10 अकबर एस बाबर, मैं गुजारिश ये करना चाह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने जो heard in Peshawar or not? No जी, we were not served notice and I could not. आपको पता नहीं चला अखबार वगैरह में पहुंच जाते? What I learnt was that a notice will be issued, but it was not issued then. If I have to go by public notice, क्या पहुंच जाते हैं? आज हमने नोटिस तो नहीं किया है ना जी. आज आप देखें अब ये कितने चुस्त हैं, पहुंच गए. जी तो आप भी थोड़ी चुस्ती दिखा देते. अपनी जातियत तक मैं इधर था नहीं, वरना मैं जरूर पहुंच जाता. क्लाइंट नहीं पहुंचा. चले खैर, इस पे कुछ ज्यादा वजन नहीं इस बात में. गुजारिश आपको देखिए, एक बात होती है, एक चीज रिपोर्ट हो रही है मीडिया में सब में, अगर आप वाकई क्या पहुंच जाते, चलें उस बात को छोड़े, आगे बढ़िए. मैं सिर्फ फैक्चुअल गुजारिश करना, आगे बढ़िए. मेरा इसमें मौक़िफ़ सिर्फ ये है कि मैं गुजारिश ये करना चाह रहा हूँ कि मैं जो चंद आइन की शिक है, खासतौर पे 17(2) वो पढ़ना चाहता हूँ. शिक तो देखिए सुन लेंगे, आपका जो अपना स्टेटस है ना वो बताइए. स्टिल यू आर ए मेंबर और नॉट? जी, आई एम अ मेंबर. आई वाज अ फाउंडिंग मेंबर. आई हैव नॉट बीन रिमूव्ड फ्रॉम मेंबरशिप. नो शो कॉज एवर नोटिस. Never resigned. I have not resigned. I have not joined another party ever. वही रिमूव. ठीक है ना, रिमूव. ये फैक्ट है जी. और जिस तरह मैंने गुजारिश की कि इलेक्शन कमीशन का अपना फैसला भी है. ठीक है, वो तो सुन लिया. अब मैं सिर्फ गुजारिश कर रहे थे. सॉरी माय लॉर्ड, आप इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे. आपको जी, मैं पहली तारीख को जो G8 का दफ्तर है, मरकजी दफ्तर, वहां गया. अपने साथ काफी 10-20 लोग लेकर गया. नॉमिनेशन पेपर लेने के लिए गया, कागजात जमा कराने की जो भी तफासील थी उनसे इंफॉर्मेशन लेने के लिए गया. मुझे कोई कागज या नॉमिनेशन पेपर या कोई रिक्वायरमेंट, कोई रूल प्रोसीजर नहीं दिया गया. मगर वो आपके हाथ है, कोई नॉमिनेशन पेपर की शक्ल हमें दिखाइए. मेरे पास नहीं है, मुझे नहीं दिया गया. बल्कि आपको नहीं दिया गया, मगर वो क्या लगता शक्ल उसकी कैसी है? मैंने जो इलेक्शन कमीशन में प्रोसीडिंग्स हुई उसका रिकॉर्ड जो मेरे पास है उसमें भी मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी जी. अगर नॉमिनेशन का कोई फॉर्मेट था, पेपर था, मैंने नहीं देखा जी. इसमें अगला पॉइंट, और ये मैंने बड़ा वजाहत में जो अपनी मेरी शिकायत है, नॉमिनेशन पेपर डिड नॉट एग्जिस्ट. कुछ नहीं. अगर आप पेज 231 पे मेरी शिकायत का पैराग्राफ नंबर 2 देखेंगे, और को नॉमिनेशन फॉर्म मिला? मेरे इल्म में नहीं है जी. अच्छा, आप बताइए. तो पेज 231 में पैराग्राफ 2 में मैंने वाज़े तौर पर लिखा कि ऑन November 30 a press release was issued on behalf of PTI core committee stating that all arrangements have been completed for holding the intra-party elections on December 2, 2023. Copy press release attached. The press release also stated the appointment of Mr. Niazullah Niazi as the PTI Chief Election Commissioner. The press release did not mention any other names of the PTI Federal Election Commission, nor did it share any other details regarding the intra-party election, including election rules and any regulations, detailed schedule of elections, nomination timeline and procedure, criteria for acceptance and rejection. आप लिख रहे हैं जी, ये मैंने जो कंप्लेंट दायर की इलेक्शन कमीशन को उसमें लिख रहा हूँ. इलेक्शन की डेट आपको पता थी जी? वो जो प्रेस रिलीज में उन्होंने कहा कि 2 तारीख को. कॉपी आपने भेजी उनको, पीटीआई को? जी, उनके पास है, बिकॉज दिस फॉर्म्स पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड. दिस वाज अ कंप्लेंट टू द इलेक्शन कमीशन. प्रेस रिलीज कौन सी कह रहे हैं आप? प्रेस रिलीज जी, ये 30 नवंबर को जो प्रेस रिलीज इशू की पार्टी ने कि हम इलेक्शन करने जा रहे हैं. लगी हुई है प्रेस रिलीज.
Press release, sir, I'll have to check. अगर नहीं हो तो दिखा दीजिएगा। इलेक्शन से पहले इशू हुई थी प्रेस। जी 30 नवंबर को हुई थी। अच्छा, और नेक्स्ट पॉइंट मैं गुजारिश ये करना चाह रहा हूँ कि 17 आर्टिकल 17 जो है उसमें दो पहलू हैं। एक तो जनरल है जो पार्टी के हवाले से है कि लोग पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं, लेकिन जो मुझसे रेलिवेंट है वो 17(2) का मैं कुछ हिस्सा पढ़ना चाहता हूँ सर। एवरी सिटीजन not being in the service of Pakistan shall have the right to form, ये पहला हिस्सा है जो सब आर्टिकल 1 में भी है, but the second one is more important to me, or be a member of a political party। तो फंडामेंटल राइट है किसी का भी कोई भी पार्टी को ज्वाइन कर लेना। और आगे है कि सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय लॉ इन द इंटरेस्ट ऑफ। सो गुजारिश ये है कि किसी का भी किसी पार्टी का मेंबर बनना फंडामेंटल राइट है। मैं फाउंडिंग मेंबर हूं, था, आज भी हूं। मैंने आज तक कभी कोई और पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं की, बल्कि मैं यही जद्दोजहद करता रहा कि इस पार्टी की इस्लाह अंदरूनी मामलात की हद तक हर पहलू में होनी चाहिए। और ये वेल डॉक्यूमेंटेड है, जो कि साइट भी हुआ फॉरेन फंडिंग का, वो भी उस काविश का एक नतीजा था। सो गुजारिश ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है। अच्छा, ये जिक्र हुआ था फाउंडिंग मेंबर्स की, आपके पास लिस्ट है? मेरे पास पुराना आइन है जिसपे मेरा नाम है, मैं फराहम कर सकता हूँ। वो कल ले आइएगा। जी मैं जी। और वो फाउंडिंग मेंबर्स में आप हैं कोई या नहीं है? सर आई हैव टू देख लीजिएगा। मुझे ये जरूर मालूम है कि मैं कल बता दीजिएगा, अगर या तो आज जवाब दें या फिर कल मैं। सर दूसरा, मैं सेक्शन 218(3) जिसका हवाला दिया गया है उसको मैं समझता हूं कि 17(2) के साथ पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इलेक्शन है सेक्शन 218 सब सेक्शन 3 जी आर्टिकल सब आर्टिकल 3 218 तो नहीं जिक्र किया। 218 it shall be the duty of the election commission to organize and conduct the election and to make such arrangements as are necessary। अच्छा, आप आइन पढ़ रहे हैं? जी आइन का। हाँ, तो उन्होंने पढ़ा जी, वो पढ़ा। हाँ। मैं सिर्फ गुजारिश कर रहा हूँ कि इंडिविजुअल मेंबर के हवाले से 17(2) को, उस पोर्शन को, मेरी मेंबरशिप को 218(3) के साथ पढ़ना है और फिर 219(e) के साथ भी पढ़ना है। बट एक और आपके मेंबरशिप का तो सवाल उन्होंने क्या ऑब्जेक्ट किया है कि आप मेंबर नहीं है? जी, पेशावर हाई कोर्ट में जो पिटीशन है वहां पर उन्होंने ये कहा कि इज नॉट अ मेंबर, और अभी भी शुरू में दिखाइए किस पैराग्राफ में कहा है। Respondents 215 are not members of PTI. Page 36, paragraph 11. Page 36, paragraph 11. जी. That the respondents 2 to 15, I was number 3 in that, are not members of PTI, nor contestants of any intra-party elections that have। ये तो एक जनरल डिनायल है। इन्होंने ये कहा। सो मेंबरशिप के हवाले से जनाब ने पूछा, हम इनको भी ये कह देते हैं कि किस बेसिस पे वो ये बात कर रहे हैं। जी जरूर, वो भी कल जवाब दे देंगे। और आप दिखाइए कि आप उसके वो क्या उसको कहते हैं, फाउंडिंग मेंबर को क्या कहेंगे? फाउंडिंग मेंबर ही था मैं, वो उसका सबूत दिखाइएगा। जी मैं अगला पॉइंट, मैं आर्टिकल 222 का हवाला भी देना चाहता हूं सर। आर्टिकल 220 जी आइन के सब एफ में, आर्टिकल 222 एफ जी आर्टिकल 222 ये कहता है सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन मजलिस शूरा पार्लियामेंट मे बाय लॉ प्रोवाइड फॉर सो मेनी थिंग्स। एफ में कहता है ऑल अदर मैटर्स नेसेसरी फॉर द ड्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द टू हाउसेज, द प्रोविंशियल असेंबलीज एंड लोकल गवर्नमेंट्स। यहां पर रुकना चाहता हूं कि ड्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द हाउसेज में अब 2017 का जब कानून आ गया है और उसमें इंट्रा पार्टी एक एम्फसाइज किया गया है कि एक अहम तरीकाकार है जो अंदरून में पार्टी होना चाहिए, तो ड्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द हाउसेज नहीं हो सकती अगर पॉलिटिकल पार्टीज इंट्रा पार्टी इलेक्शन के साथ सही क़यादत पार्टी में नहीं आएगी और फिर वो पार्टी ना फैसला करे कि कौन कौन से मुस्तहक लोग हैं जो नुमाइंदगी अवाम की करेंगे। आगे बढ़िए। और इसका जो एक्सेप्शन है सर, बट नो सच लॉ शैल हैव द इफेक्ट ऑफ टेकिंग अवे
और abridging any of the powers of the commissioner or the commission, इसमें मेरी गुजारिश ये है कि although हमारे पास डिटेल्ड रीजंस नहीं है अभी पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट या किसी कोर्ट को भी ये इख्तियार ना होगा कि वो कोई ऐसी इंटरप्रिटेशन करे जिससे कमीशन के इख्तियारात में कमी आ रही हो, और जो उसकी ड्यूटी टू कंडक्ट अ फेयर इलेक्शन है और जो 218 का बेंचमार्क है। पेशावर हाई कोर्ट क्या नंबर था, WP 6, वो मालूमात कर लें जरा रजिस्ट्रार से कि वो ऑर्डर आ गया है, और ऑर्डर आ गया है तो वो मंगवा लीजिए, और जो नहीं आया तो कब तक आ रहा है ये भी पूछ लीजिएगा। जी सो ये वो इजाफी आईनी शिक है जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूं। आगे बढ़िए। अब मैं सर इलेक्शन एक्ट पे आना चाहता हूं। जी आ जाए। इंडिविजुअल कंप्लेनेंट के हवाले से सेक्शन 15 एक नई शिक है जिसमें कंप्लेंट्स की प्रोविजन, सेक्शन 15 ऑफ द इलेक्शंस एक्ट 2000 कंप्लेंट्स। जी कंप्लेंट्स, ये पहले रोपा में नहीं था। ये 15 ये कहता है एनी पर्सन अग्रीव्ड बाय, हो गई बात, अगली बात। जी इसके बाद सर जो सेक्शंस है मैं 200 की तरफ आता हूं। 200 में मैं 200 सब सेक्शन 4 की तरफ निशानदेही करना चाहता हूं कि notwithstanding anything contained in subsection 1, a political party shall not, और इसका सब ए जो है propagate any opinion or act in a manner prejudicial to the fundamental principles enshrined in the constitution. So मेरा जो proposition है for consideration of the court वो ये है कि ये fundamental प्रिंसिपल इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस और मुस्तकिल पॉलिटिकल पार्टीज पाकिस्तान में बने ताकि जो हाउसेज हैं वो ड्यूली कॉन्स्टिट्यूट हो सकें, जो अवाम की प्रॉपर नुमाइंदगी कर सकें। जी इसके अलावा सर जो आई विल समराइज माय प्रोपोजिशन के कॉन्सिक्वेंसेज इंट्रा पार्टी इलेक्शन होल्ड ना करने के 3 हैं जो इन्विजिड हैं इलेक्शन एक्ट में। पहला सेक्शन 2025 में है जिसका एनलिस्टमेंट से ताल्लुक है। किससे? एनलिस्टमेंट ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। रजिस्ट्रेशन। जी रजिस्ट्रेशन या एनलिस्टमेंट। व्हाट इज द वर्ड यूज्ड इन द एनलिस्टमेंट? एनलिस्टमेंट, ये मैं गुजारिश करूं। एनलिस्टमेंट। जी एनलिस्टमेंट, इसमें यह है कि जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एनलिस्टमेंट के लिए आती है तो सेक्शन 202 ये कहता है कि आपने कुछ डिक्लेरेशंस या कोई सर्टिफिकेशंस देनी है, उसमें भी 209 का जिक्र है। तो अगर एक पार्टी जो 209 किसका आइन का? इलेक्शंस एक्ट जिसमें सर्टिफिकेशन है कि जी हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए। कहने की गुजारिश ये है कि अगर कोई पार्टी इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराती ही नहीं है तो वो तो एनलिस्ट होने की भी एलिजिबल नहीं है। इन्होंने कहा इन्होंने कराया। मैं आपको नहीं ये कह रहे हैं हमने कराया, अब कोई कंटेस्ट ना करे, हम कोई जबरदस्ती तो नहीं करवाएंगे उसको कंटेस्ट। बिल्कुल सही। मैं सिर्फ ये गुजारिश, इलेक्शन खत्म हो जाता है इस बात पे? जी मैं उस पे आता हूं, लेकिन मैं सिर्फ गुजारिश ये कह रहा हूं कि 3 कॉन्सिक्वेंसेज हैं विज़ावी इंट्रा पार्टी इलेक्शन। हाँ। एक पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंस ये कि पार्टी की एनलिस्टमेंट भी नहीं हो सकती। ठीक है आगे बढ़िए। दूसरा कॉन्सिक्वेंस ये है जिसका जिक्र हुआ कि अगर सर्टिफिकेट फराहम नहीं किया जाता तो फाइन इंपोज कर दिया जाएगा। ये सेक्शन 2085 में है। और तीसरा कॉन्सिक्वेंस है इनएलिजिबिलिटी ऑफ अ सिंबल। तीसरा कौन सा सेक्शन है? जी वो सेक्शन है 2154 और 5। 2115 सब सेक्शन 4 और 5। सो गुजारिश ये कि फोकस जो है पार्टी का वो तीसरे वाली कॉन्सिक्वेंस पे ज्यादा रहा। सिंबल नहीं मिला तो नुकसान आपको भी नहीं होगा? आप भी तो मेंबर है ना PTI के। फाउंडिंग मेंबर है आप, फाउंडिंग मेंबर। I am guilty of following the law and do not worry about the consequences. We are just asking a question. मेरी जात पे नहीं जी, मुझे तो फायदा होगा अगर पार्टी मुस्तहकम होगी। आप असूलों पे लड़ना चाहते हैं? जी I am guilty of following the law। अगर उसका कोई नुकसान है तो ठीक है, हम सवाल पूछते जाएंगे, आप जवाब देते जाएंगे। जो फोकस रहा है आर्गुमेंट का जो बज़ाहिर लग रहा है वो थर्ड कॉन्सिक्वेंस पे है। सो फुल पर्सपेक्टिव ये है कि इससे अखज़ ये किया जाता है कि यकीन में मुझे भी नहीं समझ आ रहा था, सब बातें चली गई हैं सिंबल पे। जी वो तो अगर इलेक्शन सही हो गया तो सब कुछ मिलना चाहिए, वो कॉन्सिक्वेंस है मेरे हिसाब से। अब सुनेंगे खान साहब को कल क्या कहते हैं।
बिकॉज ऑफ द इलेक्शंस बीइंग नियर, तो मेरे ख्याल में सिंबल का फोकस है, बट कानून की मंशा ये है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन लाजिम है। कानून की बुनियादी मंशा है कि इलेक्शन कराओ जी, साफ शफाफ कराओ, फिर बाद में चीजें मिलती जाएंगी या नहीं मिलेंगी तुम्हें, वो तो एक तरह से सजा या जजा या सजा वाली बात आ गई ना। जी बिल्कुल। अब इट इज नॉट फॉर मी, कंप्लायंस वाली बात अलग है मेरे हिसाब से। आई डोंट नो। जी बिल्कुल ऐसे ही है। मेरा शिकवा जाती तौर पर एज ए कंप्लेनेंट ये है कि मुझे मौका नहीं फराहम किया गया, जिसकी वाज़ेह निशानदेही 2 सेक्शन 208 सब 2 में भी की गई, जो हवाला दे दिया गया। मैं उसको रिपीट नहीं करता कि हर मेंबर को ये इख्तियार है कि उसको इक्वल प्रॉपर अपॉर्चुनिटी टू कंटेस्ट इलेक्शन। और कोई बात? सो ये वो अजाफी प्रोविजंस है। आप इतने अरसे से पीटीआई को तंग क्यों कर रहे हैं? पीटीआई शायद मुझे तंग कर रही है सर, मैं तो अपना हक की खातिर लड़ रहा हूँ। ये तो ये आपकी जो कब से शुरू हो गई है? 2014 नवंबर से जी। उस वक्त क्या हो गया था 2014? उस वक्त पार्टी में फंड्स का मामला था सर। मेरा ख्याल था कि गैर कानून उसमें प्रोहिबिटेड सोर्सेज है, फॉरेन फंडिंग तो एक जर्नलिस्टिक टर्म बन गई, लेकिन कानूनी मंशा ये थी कि प्रोहिबिटेड सोर्सेज से पैसे नहीं आने चाहिए। और प्रोहिबिटेड सोर्सेज क्या थी? वो ये थी कि मां सवाए इंडिविजुअल सिटीजन्स के और कोई पैसे पार्टी में नहीं दे सकता कानून के मुताबिक। तो मेरा ये कहना था कि हाँ, citizens of Pakistan, wherever they may be, can contribute to the political party, but who is not a citizen or somebody who is a corporate body, even a local company for that matter, cannot contribute to the funds. तो मेरी तो कंप्लेन उस नौयत की थी कि शफाफियत है। Companies cannot contribute. The law said जी it could not. Which section? This was section 5 and 3 of the PPO, and this is also now in sections. खैर ये इसमें इशू नहीं है, बट इट वाज स्पेसिफिक प्रोविजन है जी कि चलिए ठीक है। सोर्स क्या पॉइंट। सो मेरा इस मामले में अभी यही गुजारिश है कि जो इलेक्शन था वो बिल्कुल शफाफ तरीके से नहीं हुआ। एक आपको चुभता हुआ सवाल पूछ सकते हैं? आप खुद खड़े हुए हैं या आपके पीछे कोई खड़ा हुआ है? खुद ही खड़े हैं जी 2014 से। अच्छा, और इसमें आपने ये सवाल पूछा है तो मैं इजाजत हमारे जहन में जो बात होती मैं तो कह देता हूँ। आपकी इजाजत है तो मैं भी कैन स्पीक फ्रीली। यस। 2014 में जब मैंने कंप्लेंट की थी, उस वक्त जो भी मामलात मुहर्रकात थे, मेरी काविश जारी रही। आई फॉट सिंगल हैंडेडली अगेंस्ट the mindset that respectfully prevailed at the election commission, the mindset that was reflecting the government of that time and the powers that be. So I have stated किसकी हुकूमत थी? जी, हुकूमत तो एक है जो हर वक्त रहती है और एक हुकूमत है जो बदलती रहती है। तो मैं तो रेगुलेटरी स्ट्रगल और सियासी स्ट्रगल और प्रिंसिपल स्ट्रगल को परसिस्टेंटली विद सीरियस माइंडनेस परस्यू करता रहा हूं और अभी भी करता रहूंगा। जो भी आउटकम हो वो तो जनाब के हाथ में। Done? I have nothing further to add. ठीक है, बट आपको डॉक्यूमेंट लिया जी, मैं इंशाल्लाह। ठीक है, फिर कल इंशाल्लाह 10 बजे। खान साहब ठीक है 10 बजे। वो इलेक्शन कमीशन वाले भी ले आए होंगे ना फाइल? आपने बोला था फाइल। वो फाइल आप ले आए, इलेक्शन कमीशन की फाइल, ओरिजिनल फाइल, वो हमें जरा छोड़ दीजिएगा। ओरिजिनल फाइल लाए हैं इस मैटर की? नहीं, राइट का क्या मतलब, लाए हैं या नहीं लाए? नहीं, हाँ छोड़िए, नहीं ले जाइए, गुम भी हो सकती है, कल ले आइएगा अगर लाए नहीं है। ठीक है, अगर कोई चीज देखना चाहे हम साहब तो वो देख लेंगे। तो अगर हाँ ओरिजिनल फाइल जो भी इस मामले की है, वो लाहौर वाली, पेशावर वाली, इलेक्शन वाली, मतलब इलेक्शन से रिलेटेड जो भी बातें हैं, ठीक है 10 o'clock इसमें हाँ ऑर्डर लिख देते हैं आज का शॉर्टर से। हाँ ओके, कल का बेंच भी निकलवाएं, इशू कर दें। हाँ इसमें लिखें this civil petition for leave to appeal assails the order of the assails the order, किधर क्या order पेज, order किस पेज पे है? हाँ, assails the order dated 10 January 2024 of the Peshawar High Court, Peshawar, whereby it set aside the decision
डिसीजन कहेंगे या जजमेंट कहेंगे? द ऑर्डर ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान विद इन ब्रैकेट ECP dated 22 December 2023 and full stop and issued certain directions. The election commission, we are informed that the detailed reasons have not as yet been provided, but since the matter is time sensitive and as the elections, general elections are scheduled for 8 February 2024 in Pakistan, this matter requires immediate attention. Full stop. Accordingly, we proceeded to hear the matter. Mr. And heard Mr. Makhdoom Ali Khan and heard learned Mr. Makhdoom Ali Khan, senior ASC, full stop. Mr. Learned senior ASC, Mr. Hamid Khan has filed caveat. अच्छा, वो अली जफर साहब हमसे बात करना चाह रहे थे उधर से, उनको रिक्वेस्ट कर दीजिए कि बहुत मुश्किल होता है कभी कभी, नहीं सुबह होंगे मेरे, तो वो बेशक फॉग के बाद पहुंचे, कम से कम आपको सुन लें, तो वो अगर कोई भी एड्रेस करना चाहे तो इन पर्सन आके कर ले। नहीं उसकी जरूरत नहीं है, खाली सिंपल नोटिस। अच्छा, इधर कौन अटॉर्नी जनरल ऑफिस भी चौधरी साहब तो बैठे हुए थे, हैं वो होंगे, वो 27 की जरूरत नहीं है वैसे। हाँ, आप इसमें पार्टी तो नहीं है, मगर अगर कोई सवाल उठ गया तो हम शायद पूछ लें आपसे। हाँ ओके, 27 की जरूरत नहीं है, वैसे DAG होता है ना, जाहिर है फेडरेशन और ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से। तो जरूरत पड़ी हम आपसे पूछेंगे, मगर अभी मैटर तो लगता नहीं है आपसे कुछ पूछें। बाहर फिर भी आप हमारी रहनुमाई कर सकते हैं अगर कोई आप करना चाहें। आप तो सुबह से बैठे थे, सुन रहे थे ना सब कुछ, ठीक है। तो आपका हम वीकेंड भी खराब करना चाहते हैं? उसकी फिक्र मेरी नहीं है। अच्छा, क्या लिखा and states that and has raised preliminary legal objection with regard to the maintainability of the instant petition, and states that he will expand further thereon tomorrow. Full stop. To be treated as parter to come up tomorrow at 10 a.m. The office to inquire from the Peshawar High Court whether the detailed reasons have come, and if not, when are they expected? क्या कहा उन्होंने? ठीक है, ठीक है। Anything else you want noted? Anybody? चलें, thank you everyone for spoiling our weekend. बुरा ना माने, ऐसा ना लाइटर नोट। आइए, Thank you. जी चल। Proviso 8, subsection 1 of section 208. एक सेकंड, My lord. Can you read it? Yes, my lord. Subsection 1, then your lordship will see the proviso, provided that a period not exceeding 5 years shall intervene between any two ये elections. तो आउटर लिमिट, ये आउटर लिमिट है। आउटर इनर लिमिट तो इन्होंने खुद तय की हुई है कि 2 साल के चेयरमैन के होंगे, 3 साल के होंगे, बाकी और दो। जी सर, यही पोजीशन है। बिल्कुल बिल्कुल यही है जी। If your lordship will see page 141, जी 5.1.3, election of the chairman shall be held 2 years before each scheduled general election in the country. 5.1.4, in case the chairman position falling vacant due to any reason, the SG, which is the Secretary General, shall take additional charge of the office in the interim, and election for the chairman's office shall be held within 30 days of the position falling vacant. SG क्या है? Secretary General. वो कौन है? Secretary General, my lord. नहीं, इनके कौन कोई हैं मुंतखब? इस वक्त that's a grey area, but they claim it is Mr. Umar Ayub. The election commission maintains that
the previous Secretary General, as per their record, Mr. Asad Umar, continues to be the Secretary General on their record. Would you like to read the notification? अच्छा असद उमर साहब ने इनकी पार्टी छोड़ दी है? There's nothing on record. Press में उनके statement जरूर हैं. How did Mr. Umar Ayub was appointed? If your lordship may see page 464. Paper books आपके पास है. Page 464. Volume 2. Volume 2, my lord, page 464. This is not. This is the Chief Election Commissioner. यार क्या करते हैं? So 460. उमर जी 464 Part 2 है. Part 2. This is how the Federal Election Commission was appointed. ये तो एक नोटिफिकेशन है 28 नवंबर का. जी सर. उमर अयूब खान साहब का नोटिफिकेशन है. पढ़िए. Following the resignation of Barrister Gohar Khan on November 27, 2023, it is notified that Mr. Niazullah Khan Niazi is hereby appointed as CEC Pakistan Tehreek-e-Insaf with immediate effect. ये तो उमर अयूब खान इशू कर रहे हैं. उमर अयूब खान कर. उमर अयूब खान साहब किस तरह अपॉइंट हुए? There is nothing on the record of the Election Commission of Pakistan. नहीं तो ये गौहर खान साहब किस ओहदे से मुस्तफी हो रहे हैं? Sir, from the post of the Chief Election Commissioner. अच्छा. Okay. But again, there's nothing on the record of the Election Commission communicating that, because in law, if your lordship will see, इनका कोई इस्तीफा है या इनको निकाला गया है असद उमर साहब को? not on the record of the Election Commission. अच्छा, आप बता रहे थे तरीकेकार. जी सर. If your lordship will see page 5.1.3, which talks about the Election Commission, the election of the chairman. हो गया, तरीकेकार बताइए. जी सर. Then election of other office bearers. The elections for following offices shall be held every 3 years. देख लिया, तरीकेकार बताइए. Sir, 5.2.2, elections shall be held by direct secret ballot of the eligible party members cast to the panel of candidates as specified for each organization, including wings as given in the relevant clauses. ये बताइए ना relevant clauses. Any losing panel shall get 2 seats. In the relevant executive committee, provided it had secured more than 35% of the total poll votes. Any losing panel shall get 1 seat in the relevant executive committee, provided it had secured more than 20% of the total poll votes. The method of removal from the office is only through the SCAD as provided for in the relevant section. There is no provision for a vote of no confidence at any level. Any seats falling vacant